Assalamu alaikum everyone, and with a very full heart or heavy heart, whatever you say, I welcome you all to the last module of our course, and it has been an incredible journey. We didn't expect so much response and so much attendance in our maiden course, but you guys have been wonderful, and it was really a pleasure to facilitate all of you throughout this course. It is very important in the basically in exit exam to have a clear direction as how to study, from where to study, how to do cases on patients, how to practically achieve everything that you have learned so far. So in our opinion, in my, and I guess Dr. Baba will agree to it, कि नॉलेज से ज्यादा जो है आपकी प्रैक्टिस और आपके स्किल्स और जो एक टेक्निक है, जो स्मार्ट टेक्निक है to excel in the exam, that is more important. That I already said in the very first introductory session जो हमारा इसका हुआ था. तो वही हमारा मोटिव था बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, और आखिर तक वी हैव स्टक टू इट, दैट हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा टिप्स दे सकें नॉलेज के साथ साथ जो आपको प्रैक्टिकली एग्जाम पास करने में आए काम. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, एंड आई होप इंशाल्लाह most of you will pass, and we love to hear your feedback after this session and also once you attempt your exam. So with this brief remarks or brief uh, you can say summary of our course, I start the last session of our course. So we have our first talk station. So who is going to volunteer for one last time? Yes, who is going to volunteer for the first talk station? It's vascular orbit and functional neurosurgery. It's very important, and दो इसमें से लॉन्ग केसेस इतने नहीं आते हैं, तो इसलिए लॉन्ग केसेस को हमने इस सेशन में ओमिट किया था, बिकॉज इसमें ज्यादा जो है टॉपिक्स हमें कवर करने थे, और ज्यादातर आते भी टॉक्स में और शॉर्ट केसेस में है, तो वी काइंड ऑफ स्किप लॉन्ग केसेस ताकि हमारी आई एम डिस्कनेक्टेड. जस्ट वेट अ मिनट. I totally agree with Dr. Majabin on this point, that these sessions were basically to facilitate you or guide you people regarding the clinical exam. The basic knowledge जो है वो हम सबको है, but in clinical exam it's more about controlling your जो आप अपने words हैं उनको control कैसे करते हैं और उस time पे कैसे execute करते हैं. Case vary करता है हर दफा, and the examiner basically wants to see your presence of mind, और जिस तरीके से वो आपको डायरेक्शन देता है तो आप अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाई करके अडेप्ट करके आंसर किस तरीके से देते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन फॉर क्लिनिकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. आखिर के जो 4-5 दिन हैं, रादर देन गोइंग इनटू द थ्योरी अगेन, कुछ नई चीज पढ़ना, कहीं से कोई क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजें इस टाइम मोर एंड मोर, एंड बेसिक्स जो हैं उन पे कंसंट्रेट करें. ओवर टू यू डॉक्टर मैजेबिन. Okay, so I was asking who is going to volunteer for the first station? Anyone? Anyone can raise their hand. सब थक गए हो इसलिए? Let's go in alphabetical order today. So Oh, Dr. Ajit, can you hear us, Dr. Ajit? uh, I guess. Dr. Mishal. Dr. Mishal, are you here?
आज लगता है मैं और बाबर ही अटेम्प्ट करेंगे सेशन, मतलब स्टेशंस, ऐसा है। आ- आखिर में ऐसे ही करना पड़ेगा नहीं, इफ नोबडी। अच्छा, मुझे भी। इन लाइब्रेरी, डॉक्टर जी अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी। ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। डॉक्टर अतिया हैज ज्वाइंड। डॉक्टर अतिया, यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू अटेम्प्ट द फर्स्ट टॉक स्टेशन? डॉक्टर कोई किसी और ने नहीं करना? मेरे टॉक्स क्लियर हुए हैं। हाँ यार, किया तो हुआ है लेकिन अभी कोई करने को तैयार नहीं है। चलें ठीक है, बस मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। ओके ओके, सो डॉक्टर अतिया, आइडेंटिफाई द लेबल स्ट्रक्चर्स। ओके, with this is a card showing and okay, A seems like cavernous sinus. No, sorry, frontal sinus. Or B muscle है lateral rectus. ओके, गो D ऑन। सी। मैम सॉरी, मुझे नहीं प्रॉपर लेबलिंग आ रही है, बहुत टाइम हो गया मैंने देखी हो। कह रहे कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो ओके, ए यू सेड फ्रंटल साइनस, बी lateral rectus. Yes. Okay, so if you are saying B is lateral rectus, so what structure would it be? सी lateral rectus हो जाएगा। सॉरी, डी No, बी C क्या मैम, कहा आई आपने डोंट नो। डॉक्टर अतिया? C क्या, ये वाला? सी lateral rectus होगा मसल। ओके, एंड B? बी lateral rectus के साथ तो कुछ भी नहीं होता। आई डोंट, सॉरी, आई डोंट ओके नो व्हाट बी इज। ओके, so you एंड देन identified डी A इज and C. Okay, now what is D? This one, this thing. नॉट द ऑप्टिक नर्व, ये नीचे जा रही है। ओक्यूलोमोटर नर्व Okay और ऑप्टिक, okay, and what is श्योर। E? ये E, ऑप्टिक, E, this one. यस मैम, ऑप्टिक नर्व। Okay, what is F? This nerve is little bit difficult to identify. फिर समथिंग ऑप्टिक नर्व से नीचे जाके इमीडिएटली जा रही है। और सिक्स में You फोर said yourself कि medially जा रही है, so that's lateral rectus, okay. तो कुछ फिर oblique four, cranial four, Okay okay ocular, okay. So and if then this is cranial nerve 4, then what this muscle will be? superior oblique. Okay okay. And what is this structure? I H. Okay, this one. medial है। Sorry मैम, Okay okay. head of caudate। We are this anterior skull base. So we don't have I'm sorry, sorry, brain structures. olfactory tract, bulb, Okay. yes। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो डॉक्टर अतिया, आइडेंटिफिकेशन जो है पहले मैं बता दूं, उसके बाद में आपको वाइवा शुरू करती हूँ, ठीक है? यू आर राइट अबाउट ए, दिस इज द फ्रंटल साइनस, ठीक है। बी, बी इज द लेटरल रेक्टस, ठीक है, ये लेटरली पड़ी हुई है मसल। और अगर आप लेटरल रेक्टस देख रहे हो, तो ये वाली जो नर्व है ये आगे जा रही है, दिस इज लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। तो लेक्रिमल ग्लैंड की तरफ जो नर्व जाएगी, इट विल बी लेक्रिमल नर्व, सिंपल, ठीक। उसके बाद जो डी है, इट इज बेसिकली द फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर है, एंड दिस मसल, इसमें लेबलिंग नहीं की हुई, लेकिन ये मसल जो है वो सुपीरियोरस, जब आप हटाते हो तो ये सुपीरियर रेक्टस मसल है, ये वाली। तो उसके ऊपर ये नर्व जाती है, फ्रंटल नर्व, विच इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ V1, एंड इट डिवाइड्स इनटू टू, सुप्राट्रोक्लियर नर्व मीडियली, ये सुप्राट्रोक्लियर नर्व है, और ये सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, थोड़ा लेटरल होती है। उसके बाद ये बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रोक्लियर नर्व जो इस तरह से अराइज होती है, दैट गोज मीडियली इनटू दिस मसल विच इज द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ट्रोक्लिया का पार्ट होता है यहाँ। तो दैट नर्व ऑब्वियसली जो ट्रोक्लिया की तरफ जा रही है, सुपीरियर ऑब्लिक की तरफ जा रही है, जिसको वो सप्लाई करती है, तो ट्रोक्लियर नर्व होगी। और एच जो है वो बिल्कुल ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब या ट्रैक्ट वो यहीं से शुरू होता है, ये आपका मिड लाइन है, तो यहाँ पे क्रीबरीफॉर्म प्लेट ये होगी, ठीक है। और यहाँ से ये आपका ऑल्फैक्टरी ट्रैक शुरू होगा, ठीक है। सो प्रिटी मच डॉक्टर अतिया, वेरी गुड। नाउ I'll ask you a few questions about it.
Now, how Okay. will you classify orbital lesions? Okay, we classify into intraconal, extraconal. Intraconal is within the cone created by the muscle, so it can be neoplastic lesion like orbital meningioma, orbital glioma, nerve sheath tumor, neuruloma, and then we have artery, ophthalmic artery, any ophthalmic artery aneurysm, and Okay. then we have extracorneal lesions, which are can be a rhabdomyosarcoma. Okay, from the muscles, rhabdomyosarcoma. From the fatty tissue surrounding it, lipomas, and laterally we have a lacrimal gland. So infected lacrimal gland tumor or pleomorphic adenoma of the lacrimal gland, and then medially we have then we have the bony orbit. So the osteoid osteoma, osteosarcoma tumors from that. Excellent, excellent. So this is how exactly you tell कि intraconal, extraconal, फिर आप किस तरह से बताते हैं? Excellent. Okay, so Dr. Atiya, what is meant by annulus of Zinn? Another subzin. Um, You said intraconal and extraconal. a bone. Yes, ma'am. So intraconal, It's a what bony. kind of cone you are talking about? All the muscles, the four rectors and two obliques, they combine together to form a cone-shaped structure. So Okay. a space within that cone is called intraconal, and outside is extraconal. And these all the muscles, six muscles, come attached to a tendinous pulley over the orbital, arising from the orbital wall. So that's annulus of Zinn. Annulus of Zinn. Okay. Where exactly is annulus of Zinn in the orbit? Superior medial wall. Superior medial wall. Okay. Okay. So if you are saying annulus of Zinn, the lesions within the annulus of Zinn, they are intraconal. So how are you going to approach these lesions? Intraconal lesions. You can approach to the medial orbitotomy or Okay. lateral orbitotomy, Okay. and by open procedure and endoscopic through the ethmoid sinus. Okay. Okay. Can you tell me the segments of optic nerve? Okay, it has four segments. One is at the disc, it's 1 mm. Then we have a canalicular segment, which is around 10 mm. Then canalicular spicula, which I forgot the fourth one, and is third one is around 25 mm. I forgot the name. And then we have a chiasm segment. Okay. Okay. So Dr. Atiya, you were very good. जी. ठीक है, प्रिटी मच ऑलमोस्ट सभी आपने बताया, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करना होता है, तो वो रिवीजन आई होप आपकी हो गई होगी, ठीक है। सो वेरी गुड डॉक्टर अतिया, ठीक है। आई हैव रिटन द की एज वेल, फ्रंटल साइनस, लेटरल रेक्टस जो अभी हमने आइडेंटिफाई किए, ठीक है। अच्छा, यही पिक्चर जो है ये लेबल्ड है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सबसे पहले ये फ्रंटल साइनस था, ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। ये मैं बता रही थी लेक्रिमल ग्लैंड है, जो नर्व लेक्रिमल ग्लैंड की तरफ जारी होगी वो नर्व ऑब्वियसली लेक्रिमल नर्व होगी, ठीक है। लेटरल जाहिर सी बात है, जो मसल पड़ी होगी वो लेटरल रेक्टस होगी, ठीक है। जो यहाँ पे मीडियली होती है, मीडियल रेक्टस भी होती है, लेकिन वो थोड़ी डीप होती है। सुपीरियरली जो सुपरफिशियल आपको नजर आती है वो सुपीरियर ओब्लिक होती है, और जो नर्व उसकी तरफ जा रही है ऑब्वियसली वो आपकी ट्रोक्लियर नर्व होती है, ठीक। अच्छा, ये नर्व मैंने कही थी ये आपकी फ्रंटल नर्व है। जो फ्रंटल नर्व होती है, इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ऑल्फैक्टरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। और जो जब ट्राइजेमिनल नर्व आती है मतलब सुपॉप फिशर से जब एंटर होती है इन द ऑर्बिट, इट डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेस। A branch that goes straight, right, that is called frontal nerve, which further divides medially into the supratrochlear and laterally into the supraorbital nerve, and a lateral branch, ठीक है, जो कि यहाँ से ऐसे नजर आ रही है, which is the lacrimal nerve। और एक मीडियल ब्रांच होती है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, वो होती है नेजोसिलियरी नर्व, जो थोड़ा सा डीप जाती है, नेजोसिलियरी नर्व। तो ये तीन ब्रांचेस होती हैं आपकी
जो है वो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिफाई करना होता है वो ये होता है ऑल्फैक्टरी, आपका जो है सारा एपरेटस, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और पीछे जो है वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है। ऑप्टिक नर्व इजी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, फिर यहाँ पे ऑप्टिक कायाजम, यहाँ पे आपकी इंटरनल कैरोटिड्स आ जाती हैं, और यहाँ पे आपका सारा ट्राइजेमिनल, उसकी जो है वो ये वाली जो ब्रांच है वो मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन, और ये जो ब्रांच अभी हमने ट्रेस की थी यहाँ से वो आपकी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन। सो दिस इज प्रिटी मच इट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको थोड़ा बहुत याद हो, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरह का कोई स्टेशन आता है। ये थोड़ी सी डीपर डायसेक्शन है, ये वो ही सारी चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है वो डीपर दिखाया गया है। फ्रंटल नर्व, अच्छा यहाँ पे जो है सुपीरियर जो है एलिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस हटाइए, जो फ्रंटल नर्व होती है ना, या जो ऑफ्थेल्मिक की जो ब्रांचेस हैं डिवीजन की, दे लाई बिटवीन द सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। आई विल अगेन टेक दिस पॉइंटर, ये है आपकी सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है, और ये है लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियोरस। तो इन दोनों के बीच में ये ब्रांचेस लाया करती हैं फ्रंटल नर्व जो आपकी आती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई दीज नर्व्स। अच्छा, उसके अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो प्रिटी मच यही चीजें जो है वो, अगर एनेटमी का कोई सेशन स्टेशन आता है तो आप उससे आइडेंटिफाई करते हो। ये पिक्चर मैंने इस लिंक से ली है। अच्छा, अब हम आते हैं कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। सिंपल जो चीजें आपने आइडेंटिफाई की हैं वही होती हैं ऑर्बिट में। एक तो आई ग्लोब होता है, ठीक है, न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है बाकी, ठीक है। न्यूरोवेस्कुलर बंडल में जो नर्व्स होती हैं वो आपको सारी पता है कौन कौन सी होती हैं। वेसल्स में ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है, ठीक है, और वेन्स में सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन्स होती हैं, ठीक है। मसल्स होती हैं चारों रेक्टाइल, ठीक, और ऑर्बिटल फैट होता है। अब आते हैं लीजन्स पे। जब हम लीजन्स की बात करते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर अतिया ने वैसे बताया कि इंट्राकोनल और एक्स्ट्राकोनल होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप ऑक्यूलर लीजन्स को अलग रख सकते हो, ऑप्टिक नर्व के लीजन्स को भी अलग रख सकते हो, लेकिन ब्रॉडली सेइंग वी हैव एक्स्ट्राकोनल एंड इंट्राकोनल। जब बात करते हैं इंट्राकोनल की तो उसमें आपसे एन्युलस ऑफ जिन पूछते हैं। एन्युलस ऑफ जिन क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ टेंडिनस रिंग, ठीक है। इट इज अ टेंडिनस रिंग, जो कि किस जगह पर होता है? जो कि इस जगह पर होता है, ठीक है। ये आपकी है ऑप्टिक कैनाल और ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। इस जगह पे एक सराउंडिंग में एक मसल का टेंडिनस रिंग होता है जिसे आप एन्युलस ऑफ जिन कहते हो। कैसे बनता है वो? बाय सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या गुजरता है? आपकी जो ऑप्टिक कैनाल है उससे आपको पता है ऑप्टिक नर्व होती है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जो आपकी नर्व्स होती हैं उसमें जो है वो आपकी फोर्थ नर्व, सिक्स नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल की ऑफ्थेल्मिक डिवीजन। कुछ जो है जैसे लैक्रिमल नर्व है और जो है सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है वो आउटसाइड ऑफ एन्युलस ऑफ जिन जाते हैं, बाकी जो नर्व्स हैं वो सारी विद इन द एन्युलस ऑफ जिन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता हो कि व्हाट इज एन्युलस ऑफ जिन। अच्छा, उसके बाद यही पिक्चर यहाँ दिखाई है मैंने, ठीक है। ये एनुलस ऑफ जिन है, ठीक है, और ये सारी मसल्स उसकी वॉल बना रही हैं और ये नर्व्स। अच्छा, एनुलस ऑफ जिन के बाहर कौन कौन सी नर्व्स जा रही हैं? लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड ट्रोक्लियर नर्व। सॉरी, ट्रोक्लियर मैंने इसमें बोल दिया था। लैक्रिमल, फ्रंटल एंड ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। बाकी ऑप्टिक नर्व, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, एब्ड्यूसेंस नर्व, ये जो है वो आपकी विद इन द एनुलस ऑफ जिन जाती हैं। तो इसी तरह से आप इंट्राकोनल और एक्स्ट्राकोनल में डिवाइड करते हो लीजन्स को। इंट्राकोनल जो होते हैं वो उसमें आप क्रेनियल नर्व्स जो आपकी जो जो जा रही हैं, ऑप्टिक नर्व या जिस जो भी आ रहे हैं, सिलियरी गैंग्लियन, ऑप्थेल्मिक आर्टरी जिस तरह एन्यूरिज्म हो सकते हैं। एक्स्ट्राकोनल में जो नर्व्स बाहर जा रही हैं एन्यूरस जिंक से, लैक्रिमल, फ्रंटल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व एंड ट्रोक्लियर नर्व, और लैक्रिमल ग्लैंड के जो लीजन्स हैं वो आप एक्स्ट्राकोनल पे रखेंगे, ठीक है। यही वही पिक्चर्स हैं कि इंट्राकोनल लीजन्स दे कैन बी प्रेजेंट आइदर लेटरली, सेंट्रली और मीडियली, ठीक है। एन्युलस ऑफ जिन है उसको आपने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, लेटरल, मिडलाइन या सेंट्रल एंड मीडियल, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से फॉर एग्जांपल एमआरआई है तो दिस इज अ लीजन व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द इंट्राकोनल कंपार्टमेंट एंड दिस इज द लीजन, ठीक है, व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द एक्स्ट्राकोनल कंपार्टमेंट। अब आते हैं लीजन जब आप डिफरेंशियल बताते हो उसमें एडल्ट और पीडियाट्रिक के अलग भी आप एक तरीका तो ये है कि आप बताओ कि इंट्राकोनल लीजन है या एक्स्ट्राकोनल है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप उसको बिनाइन या मेलिग्नेंट लीजन्स में डिवाइड करो या एडल्ट और पीडियाट्रिक लीजन्स में डिवाइड करो, ठीक है। तो उसमें आपके सारे डिफरेंशियल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो सेगमेंट्स मैंने पूछे थे ऑप्टिक नर्व के, सो दे आर 4 सेगमेंट्स, ठीक है। सबसे जो छोटा सेगमेंट होता है जो कि 1 मिलीमीटर का होता है, दैट इज इंट्राओक्यूलर सेगमेंट, जो आपका होता है ब्लाइंड स्पॉट पे, जहाँ जहाँ से ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, तो इट्स द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, वो होता है आपका इंट्राओक्यूलर सेगमेंट। देन यू हैव ऑर्बिट के अंदर जो सेगमेंट होता है इंट्रा ऑर्बिटल, विच इज 25 mm। देन जो ऑप्टिक कैनाल के अंदर सेगमेंट होता है, इट इज इंट्रा कैनालिकुलर अराउंड 10 mm। और फिर जो इंट्राक्रेनियल सेगमेंट होता है, फिर जाके आगे वो कायाजम बनाता है, दैट्स द अगेन 10 to 15 mm, ठीक है। सो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए। बात आती है ऑर्बिटल अप्रोचेस पे, तो दे आर मल्टीपल अप्रोचेस। जो ऑर्बिट की वॉल्स हैं वो 4 होती हैं, ठीक है, रूफ, फ्लोर, मीडियल एंड लेटरल वॉल, ठीक है। तो उनको अप्रोच करने के लिए वी हैव दिस 360 डिग्री अप्रोच। उसमें मोस्टली जब आप रूफ या लेटरल ऑर्बिट की बात करते हो तो टेरियोनल अप्रोच से जाते हो, ठीक है। आप इससे रूफ को भी कर सकते हो और लेटरल वॉल को भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आईब्रो या आईलिड की अप्रोचेस जो होती हैं, उसमें आप लेटरल ऑर्बिटोटोमी उसके थ्रू आप कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट को करना है तो आप एंडोनेजल अप्रोच से जाते हो, ठीक है, एंडोस्कोपिक एंडोनेजल। और अगर फ्लोर की तरफ जाना है तो आप जो है मैक्सिलरी जो है वो जाइगोमेटिक ऑस्टियोटोमीज करते हो। फ्लोर को भी यू कैन अप्रोच थ्रू एंडोस्कोपिक एंडोनेजल अप्रोच, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो मीडियली और इंफीरियरली मैक्सिला की तरफ जाना पड़ता है। सो दिस इज हाउ, दिस इज अ 360 डिग्री अप्रोच, ठीक है। इसमें यही दिखाया है, एंडोस्कोपिक एंडोनेजल अप्रोच से आप मीडियल अब जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेटरल ऑर्बिटोटोमी करनी है रूफ और लेटरल वॉल को, तो उसमें जो है वो आप लेटरल ऑर्बिटोटोमी या टेरियोनल फ्रंटोटेम्पोरल क्रेनियोटोमी के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको फ्लोर के उसमें करना है तो आपको या तो जो है वो एडिशन ऑफ जाइगोमेटिक ऑस्टियोटोमी करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो फॉर इट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ऑर्बिट और भी आगे डिस्कस होगा, बट दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ऑर्बिट। एनीबडी, डॉक्टर अतिया, आपको कुछ पूछना हो स्टेशन में? No, ma'am. Thank you. ओके, किसी और को कुछ पूछना हो, और वी कैन मूव ऑन टू द सेकंड स्टेशन। Clear, everyone? Okay, so if it's clear, let me ask who will volunteer for the next station. So who is going to volunteer for station 2? Anyone? Anyone? Or should I choose randomly? Nahi. I understand vascular thoda sa challenging hai and it can be difficult, but it's all for your practice. So anyone can volunteer. Anyone, please. Dr. Harun, Dr. Manik. Yes, ma'am, I'm available, but actually, my exam is late, so I'm waiting for the FCPS candidate that they can participate. If Okay. nobody is present, then I can volunteer, no problem. Okay, if anyone wants to participate, they can raise their hand, or then if not, then we can take Dr. Harun. Anyone? Okay, no one yet. Okay, Dr. Harun. Yes, ma'am. Okay, so this is your scenario. A 32-year-old woman presented with abrupt onset of severe headache and left-sided weakness. So read the images and tell your findings. This is a DSA of a 32-year-old woman, and these are oblique and sagittal views. And this is most probably 4-vessel angiogram showing there is a normal carotid flow, and I can appreciate they can appreciate a tuft of this. I can say this is nidus, Okay. and other small vessels. Okay. So in your opinion, what is it?
I think it's AVM. AVM. So where are the feeding vessels? I mean, from where it is receiving its feeders? Ma'am, deep in the occipital lobe. You know exactly which vessels? Exactly. mm, Can you exactly say which arteries are feeding it? Ma'am, not exactly, but I think Dhaka maybe. Okay, so DACA AVM. Okay. So, can you identify the venous drainage? Mm, Or can you give a rough idea whether it is a superficial drainage or a deep no, drainage? no, it is not deep. It is deep drainage, allocate area, and Okay. the most probably from the mm, Okay, so you are saying actually, this ma'am, is my vascular is not so good. okay. So Okay, this is the purpose of this session because I understand that vascular जो है वो थोड़ी सी tricky है, तो it is very Mhm, important to see again and again these images so that to be familiar with it. Okay, okay. So Dr. Harun, tell me. Okay, this is an AVM. I'm telling you, the size is 2 centimeter. mhm, The venous drainage is mhm, deep. Okay, and it mhm, is on eloquent cortex. So now, mhm. what is the Spessler Martin grade? Ma'am, the one score for the size, and ma'am, one for the eloquent area, one for the deep drainage. Okay, so it's 3. So three score, yes. Okay, so how will you manage this case? Ma'am, first of all, I will admit the patient and then and I will counsel the attendants regarding the disease and also the patient as well. And then I will start anti-epileptics, steroids, not steroid, anti-epileptics and analgesics. Then I will tell patient that your EVM special Martin score is 3, so it is operatable. And I will counsel regarding the surgery, and I will tell about the pros and cons of the surgery to the patient and its attendants. And then I will arrange the blood for the patient, anesthesia workup, pulmonology, and the cardiology workup. Okay, any other options available? Other options are available like uh, flow diverter and endovascular. But the score is 3, so that's why it's operable. But the AVM is deep seated and the size is 2. Its size is 2. Mm, Any other specific modality that can? Dr. Omar told that stereotactic. Okay, so stereotactic. Okay, Yes, so obviously yes. स्पेसलर मार्टिन बिल्कुल 3 है। वो एक आपका जो है Mm-hmm. वो एक चार्ट जो है वो बना हुआ है जहन में कि भाई 3 है तो वील गो फॉर सर्जरी। बट आप एनजीओ पे ये भी देखेंगे Mm-hmm. कि वो जगह कौन सी है। ठीक है, अगर कॉर्टिकल एवीएम हो तो Mm-hmm. वी कैन गो फॉर सर्जरी। बट अगर डीप है, Mm-hmm. सब कॉर्टिकल एवीएम है, एलोक्वेंट है, साइज भी उसका 2 से कम है या 2.5 से कम है, तो स्टीरियोटैक्टिक वुड बी अ बेटर Mm-hmm. ऑप्शन। ठीक है, अच्छा। Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so can you okay, you said that the feeders are in this image. Feeders कहाँ से आ रहे हैं? मैम ढाका से लग रहा था मुझे मुझे DACA. DACA means distal ACA, right? जैसे इंटीरियर एसी जैसे Okay, so can you tell me the segments of ACA? 4 सेगमेंट्स हैं मैम। Okay, name them. एग्जैक्टली मैम नाम तो नहीं पता लेकिन वो इसमें A1 A2
A1 का नाम जो है वो क्या है, A2 क्या है? नाम एग्जैक्टली अभी नहीं यार. Okay. Okay, so if it is an AVM, right? And you are, for example, you are going for surgery, and then there is normal pressure perfusion breakthrough. What is normal perfusion pressure breakthrough? Ma'am, it is a phenomena that that AVM is getting supply from the normal vessels, Hmm. and there is no reperfusion injury, and also uh, So what exactly happens in uh, normal perfusion pressure breakthrough? ma'am, actually it is the where where AVM exists, the because that vessel is damaged and the blood supply is coming from the alternate way, like from the collaterals. Okay. And so that there is so that reperfusion, if the reperfusion injury, then there is ischemia. So this is actually the savior. So by maintaining the blood pressure from flow from the collaterals, so save from the reperfusion injury. Okay. Okay. Have you heard about Lawton-Young grading? Yes, ma'am. Lawton Young, ma'am. Actually, Lawton Young having three like age, where age का score है उसमें ma'am, Okay. size Hmm. and bleed, I think. Okay. Okay. If we're confused regarding Special Martin Hospital or regarding any AVM, like that whether we will do surgery or we will do the tactic or endovascular approach, then we will count the Lawton Young score. So by mixing these both scores, we have to conclude that we will go to either for surgery or for the endovascular approach. Okay, okay. Okay, Dr. Harun, you are very good. ठीक है. As far as theory is concerned, you are very good. ठीक है. बाकी एंजियोग्राफी पे जो है उसी का हमारा पर्पस है आज के सेशन का, कि हम थोड़ा एंजियोग्राफी से फेमिलियर हो जाए, ताकि हमारे एग्जाम में अगर आता है एंजियोग्राफी तो हम एटलीस्ट जो है उसको हम्म इंटरप्रेट कर सकें. सबसे पहली बात, आपने हम्म आइडेंटिफाई सही किया. ठीक है. क्या है एंजियोग्राम हम्म और किस जगह का एन्यूरिज्म है, सॉरी एवीएम है. ठीक है. यहाँ पे जिस तरह हम्म से आप बताते हो, पहले तो आप बताते हो कि क्या है डीएसए. ठीक है, आपने सही बताया. ठीक. हम्म दूसरा, कौन सा व्यू हम्म है. ठीक है, तो आप बोलते हो एपी व्यू और लेटरल व्यू. ठीक है. ऑब्लिक भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेटरल ऑब्लिक व्यू ही है बिल्कुल. लेकिन जब तक आपको इतना क्लियर नहीं होता, आप इसको लेटरल व्यू ही बोलो. ठीक है. सो दिस इज एपी व्यू, ठीक दिस इज लेटरल ठीक व्यू. ठीक. तीसरा, आप क्या ठीक बताते हो, ठीक कौन सा फेज है, आर्टीरियल फेज है या वीनस फेज है. ठीक है. आर्टीरियल फेज में आपको आर्टरीज नजर आएंगी. ठीक है. आप इसको इस लेवल पे 4 वेसल या 6 वेसल डीएसए नहीं कहोगे. आप सिर्फ कहोगे कि किस, आपको कौन सी आर्टरी मेन नजर आ रही है. देखो, आप यहाँ पे आपको राइट आईसीए नजर आ रही है, लेफ्ट नहीं नजर ऐसे आ रही. ठीक है. तो आप बोलोगे हम्म राइट आईसीए इंजेक्शन. ठीक है. आर्टीरियल फेज. हम्म ठीक है. क्योंकि इसमें आपको वेन्स ओके नजर नहीं आ, सुपीरियर सैजिटल साइनस, सुपरफिशियल कॉर्टिकल वेन्स आपको इसमें नजर नहीं आ रही है, आपको सिर्फ आर्टरीज नजर आ रही है. अगर कोई वेन नजर आ रही है तो वो ये वेन नजर आ रही है जो इसकी ड्रेनिंग वेन है. और यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एवीएम का, कि आपको ड्रेनिंग वेन आर्टीरियल फेज में नजर आती है. ठीक है. तो आप क्या कहोगे, किस तरह आप डिस्क्राइब करोगे, दिस इज डीएसए ऑफ दिस पेशेंट. ठीक है. दिस इज द एपी व्यू एंड लेटरल व्यू विथ राइट आईसीए इंजेक्शन, आर्टीरियल फेस. ये आपको बतानी होती है 3-4 बेसिक चीजें. ठीक. उसके बाद आप डिस्क्राइब करना शुरू करते हो कि ऑन द एपी व्यू वी कैन सी दैट देयर इज अ टेंगल ऑफ वेसल्स. ठीक है. abnormal vessels located in the territory of right sided ACA as well as MCA, so that it is getting feeders from the ACA. right. इसमें नेक्स्ट पिक्चर में मैं दिखाती हूँ. ये आपका एवीएम है, ये आईसीए है, यहाँ पे ये सारी एमसीए है, और ये आपकी एंटीरियर सेरिब्रल है. इसी तरह से इस व्यू में, लेटरल व्यू में, दिस इज एसीए,
दिस इज एमसीए एंड दिस इज आईसीए, ठीक है। तो दिस इज द एवीएम। आपकी जो फीडर्स आ रही हैं वो दोनों से आ रही हैं, यहाँ पे आईसीए से भी आ रही हैं, एमसीए से भी आ रही हैं, ठीक है, दोनों जगह से आ रही हैं। जो आपकी ड्रेनिंग है वेन, वो ये जो बड़ी सी वेन आपको नजर आ रही थी आर्टीरियल फेज में जो नजर आ रही थी, वो आपकी ड्रेनिंग वेन है। डीप है, क्यों डीप कह रहे हैं? अगर सुपरफिशियल होती तो सुपीरियर सेरेब्रल साइनस की तरफ जा रही होती, ठीक है, या किसी कॉर्टिकल वेन की, ये बाहर का कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल वेन की तरफ जा रही होती, ठीक है, लेकिन ये जा रही है अंदर डीप की तरफ। डीप में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी डीप वीनस सिस्टम में इंटरनल सेरेब्रल वेन है, ठीक है, या जो है वो आपकी बेजल वेन है, तो ये डीप इसकी जा रही है, तो दिस इज डीप जो है इसका ड्रेनेज, इस तरह से आप बताओगे, ठीक है। सुपरफिशियल होता तो या तो उसकी वेन यहाँ पे होती या सुपीरियर सेरेब्रल साइनस की तरफ यहाँ पर होती, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप उसको डिस्क्राइब करते हो। दूसरा, साइज के बारे में आप इतना नहीं बता सकते हो, साइज का आप एग्जामिनर से पूछते हो कि दिस इज रफली लुक्स लाइक टू बी लेस देन 3, एटलीस्ट आप 3 का तो जहन में रखो, क्योंकि स्पेशलर मार्टिन ग्रेडिंग पे लेस देन 3, 3 to 6 और मोर देन 6, तो एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो कि 3 से कम लग रहा है, 3 to 6 लग रहा है या मोर देन 6, बट स्टिल यू विल से द एग्जामिनर दैट आई नीड रिपोर्टिंग, ठीक है, टू नो एग्जैक्टली द साइज, बट इन दिस इमेज इट लुक्स लाइक टू बी लेस देन 3, ठीक है, ताकि आपका वो रफली आप स्पेशलर मार्टिन आप जो है उस पर कर लो, क्योंकि आपने डीप वीनस ड्रेनेज तो देख लिया, आपने जो है वो एलोक्वेंट नॉन एलोक्वेंट भी देख लिया, ठीक है, और आपको सिर्फ साइज का थोड़ा होता है कि साइज क्या है तो उस हिसाब से आप ग्रेडिंग करो, ठीक है। तो ये आपको चीजें, अच्छा, ये इसी पेशेंट का एमआरआई है, ठीक है। T1 पे जो है इट इज अपियरिंग हाइपर इंटेंस एज वेल एज हाइपर इंटेंस ऑन T2, तो इट मींस दैट द ब्लीडिंग, ये इसका रप्चर हुआ है। आप लॉटन यंग जो पूछ रहे थे उसका ये था कि इसमें रप्चर हुआ है, ठीक है, तो इट वाज सब एक्यूट लेट हेमरेज। तो लॉटन यंग में रप्चर का जो होता है उसका आई गेस 0 होता है, वन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आगे आते हैं उस पर, ठीक है। तो उसमें आपको ये भी पता चल रहा है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये है कि दिस इज डीएसए, सॉरी दिस इज एमआरए, सॉरी सॉरी एमआरए, ठीक है, ये एमआरए एमआरए, ठीक है। एमआरए और डीएसए में देखें फर्क, ठीक है। ये डीएसए है, डीएसए में व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक वेसल्स है, ठीक है, इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है, व्हाइट वेसल्स हैं। दिस इज अ वेरी लेमन, इस तरह से मैं बता रही हूँ, लेकिन असल में उस वक्त जो है वो आप एकदम से कोई एंजियोग्राम देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये डीएसए है, एमआरए है, सीटी एंजियो है। सीटी एंजियो तो फिर भी इजी होता है आइडेंटिफाई करने का, आपको बोन नजर आ रही होती है, ठीक है, बोन नजर आ उसमें ब्लैक वेसल्स। हाँ उसमें आपको बोन नजर आ रही होती है, तो आपको उसमें उसमें वेसल्स भी वाइट होती हैं, ठीक है, वेसल्स वाइट होती हैं सीटी एंजियो में, ठीक है। तो उसमें जो है आप फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन डीएसए और एमआरए में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि जो डीएसए होता है उसमें आपको वेसल्स ब्लैक नजर आती हैं, और जो एमआरए होता है उसमें वेसल्स नजर आती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये दूसरा पेशेंट है, वो वाला पेशेंट नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो ऑक्सीपिटल की तरफ जो है एवीएम नजर आ रहा है, राइट ऑक्सीपिट में, ऑक्सीपिटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। तो ये दिखाने का ये मकसद था। अच्छा, ये इसी पेशेंट का, ये इसी पेशेंट का डीएसए है, ठीक है, ये एमआरए था और ये डीएसए। तो ये डीएसए में जो है ये हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीपिटल लूप की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा, इसकी फीडर्स जो है वो एमसीए से ही जा रही हैं पीछे, एमसीए की जो पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं उससे आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी ड्रेनिंग वेन्स, उसकी आर्टरीज हैं, इसमें ड्रेनिंग वेन जो है वो इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही है, लेकिन बहरहाल शायद ये लग रही है जो पोस्टीरियर साइड पे सुपीरियर साइड से ड्रेन कर रही है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है एवीएम का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शॉर्ट केस में तो इतना नहीं, लेकिन टॉक्स में जरूर आपको जो है स्टेशन लगेगा, ठीक है। डेफिनेशन एवीएम की क्लियरली आपको याद हो। एवीएम क्या है? डायलेटेड आर्टरीज एंड वेन्स विद डिस्प्लास्टिक वेसल्स, ठीक है, नो कैपिलरी बेड, नो इंटरवेनिंग ब्रेन पैरेन्काइमा, ठीक है। आर्टरीज होती हैं, फिर नाइडस होता है, ठीक है। हाँ डॉक्टर अतिया, लॉन्ग केस आता है, लेकिन लॉन्ग केस बहुत कम ऐसा होता है कि एवीएम पे, ठीक है, आता है। लास्ट टाइम आया ना मैम, लॉन्ग केस में आया ना, वो ठीक है, कैंडिडेट को फेल करने के लिए मुझे देती है। हाँ वो थोड़ा सा जो है वो लेस कॉमन होता है, लेकिन आता है। आई एम श्योर इतना अभी हम रिवाइज कर लेंगे, अगर लॉन्ग केस में भी आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन एवीएम की आपको आनी चाहिए कि आर्टेरियोवेनस मेल्फॉर्मेशन है, डिस्प्लास्टिक आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, डायलेटेड डिस्प्लास्टिक आर्टरीज एंड वेन्स विथ अ नाइडस बट नो कैपिलरीज, नो इंटरवीनिंग ब्रेन पैरेन्काइमा,
ठीक है। कंजेनाइटल जो है वो हेरिडिटी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में होता है, एक्वायर्ड भी होता है, ज्यादातर एक्वायर्ड होते हैं। मीडियम टू हाई प्रेशर हाई फ्लो होता है, ठीक है। दो मोस्ट कॉमन इसके फीचर्स होते हैं, हेमरेज मोस्ट कॉमनली 58% और सीजर्स। जितना छोटा एवीएम होगा उतना ज्यादा हेमरेज के चांसेस होते हैं, जितना बड़ा एवीएम होगा उतने ज्यादा सीजर्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये दो इसके मोस्ट कॉमन है और ये दो ज्यादातर जो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम हेमरेज का रिस्क होता है इज 1% पर ईयर, बट अगर इस पेशेंट को ऑलरेडी एक दफा हेमरेज हो चुका है तो द रिस्क इंक्रीजेस टू अराउंड 5% पर ईयर। और कौन कौन से रिकरेंट हेमरेज के रिस्क फैक्टर्स होते हैं? इंक्रीजिंग एज, डीप ड्रेनेज, फीडिंग आर्टरी एन्यूरिज्म एंड फीमेल जेंडर। आप क्लासिफाई किस तरह करते हो? 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक पेरेंकाइमल होते हैं, ड्यूरल होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। पेरेंकाइमा में फिर आप बाहर से जो है कॉर्टेक्स की तरफ से अंदर आते हो, कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल, ठीक है। मतलब कॉर्टिकल को बेसिकली पायल, सब कॉर्टिकल, पैरामेट्रिकुलर कंबाइंड। प्योर ड्यूरल होते हैं और मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एवीएम में कभी कभी एन्यूरिज्म्स एसोसिएटेड होते हैं, तो उसमें जो है द एन्यूरिज्म्स कैन बी, अब एवीएम में क्या क्या है हमारे पास? आर्टरीज हैं, ठीक है, डायलेटेड डिस्प्लास्टिक, नाइडस है और वेन्स है, डायलेटेड डिस्प्लास्टिक। इन तीनों तीनों जगह में किसी में भी एवीएम के साथ एन्यूरिज्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई फ्लो है, तो एन्यूरिज्म हमारा मैकेनिज्म यही होता है बनने का कि जहां भी ब्लड फ्लो बहुत हाई फ्लो होता है, जैसे हाइपरटेंशन में ये मैकेनिज्म है, वहां पे एन्यूरिज्म बन जाता है उन वेसल्स में। तो इसी तरह से क्योंकि एवीएम हाई फ्लो होता है, हाई प्रेशर होता है, तो इसी वजह से उन वेसल्स में, और वैसे भी वेसल्स भी डिस्प्लास्टिक होती हैं, तो वहां पे एन्यूरिज्म के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एन्यूरिज्म कैन बी आर्टीरियल, इंट्रानाइडल और वीनस, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आर्टीरियल एन्यूरिज्म्स की है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने छोटा सा जो है वो इस पे लिखा है जो बज वर्ड्स हैं, ठीक है। इप्सीलेटरल ऑन मेजर फीडिंग आर्टरी 1, 1A contralateral on major feeding artery, 2 superficial feeding artery, 3 deep feeding artery, 4 unrelated to artery unrelated to AVM। तो ये थोड़ा सा जो है इजी रहता है आप लोगों को इस तरह याद करने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो कि एवीएम के साथ एन्यूरिज्म्स जो है वो एसोसिएटेड होती है, तो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। एंजियोग्राफी पे जैसे मैंने वही बताया, जब आप बताते हो एंजियोग्राफी पे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप यही चीजें बोलते हो जो अभी हमने डिस्कस की। टेंगल ऑफ वेसल्स, फीडिंग आर्टरी कौन सी है, ड्रेनिंग वेन कौन सी है, और किस फेज में आपको वेन्स नजर आ रही है, व्हाट फेज में होता है। स्पेसलर मार्टिन कांट बी जो है वो फॉरगॉटन, ठीक है। ये सारे आपको, ये सारी बुकिश चीजें हैं जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। एलोक्वेंट कॉर्टेक्स आप किसको कहते हो? सेंसरी, मोटर, ब्रोकास, वर्निकीज, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। बेसल गैंग्लिया जो आपके सारे आ रहे हैं, ब्रेन स्टेम, सेरिबेला पेडिकल्स एंड डीप सेरिबेला न्यूक्लिया, ठीक है। सुपरफिशियल ड्रेनेज आप कब बोलते हो? जब कॉर्टिकल वीनस सिस्टम में जा रहा है। डीप कब बोलते हो? जब इंटरनल सेरिब्रल वेन, बेसल वेन या प्री सेंट्रल सेरिबेला। ये सारी वेन्स हमने डिस्कस की थी जब हमने फाइनल डिस्कस किया था पहले मॉड्यूल में। मैनेजमेंट रिकमेंडेशन 1 और 2, ग्रेड ए क्लास ए में आप करते हो सर्जरी, ग्रेड 3 मल्टी मोडेलिटी, ठीक है, और ग्रेड 4 एंड 5 में आप करते हो क्लिनिकली इसको ऑब्जर्व। और अगर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, स्टील रिलेटेड सिम्टम्स, स्टील रिलेटेड सिम्टम्स ये होते हैं क्योंकि एवीएम की जगह पे ज्यादा फ्लो होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, तो सारा ब्लड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेन के, दे आर स्टोलन फ्रॉम एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो उस जगह के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर कॉर्टेक्स पे एवीएम है, तो सारा ब्लड जो है वो एवीएम की तरफ डाइवर्ट होता है, तो मोटर कॉर्टेक्स का स्कीमिया होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को उसके साइड के मतलब हेमीप्लेजिया, हेमीप्रेसिस के सिम्टम्स आते हैं। सो दीज आर स्टील रिलेटेड सिम्टम्स, ठीक है। या एन्यूरिज्म है, अगर कोई फॉलो अप एंजियोग्राम आप कर रहे हो पेशेंट का, हर 5 साल एंजियोग्राम करवा रहे हो, उसमें आपको कोई एन्यूरिज्म नजर आ जाता है, तो दैट कैन बी ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। तो ये स्पेसलर मार्टिन का ही एक वो बना हुआ है, ठीक है, किस तरह से करते हो। फिर आपका लॉटन यंग आता है, ठीक है। लॉटन यंग में एज आती है, प्रेजेंटेशन आती है, पैटर्न आता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है या डिफ्यूज है। सर्जरी आप करते हो फॉर ग्रेड्स 1 और 2। इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो आप इमीडिएटली हेमरेज का रिस्क खत्म कर देते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। कौन से एक इन्वेसिव होता है, रिस्की होता है, ठीक है, कॉस्ट भी कभी कभी होती है उसकी।
जो मैंने अभी बात की स्टीरियोटैक्टिक की, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, डीप है, तो उसमें आप स्टीरियोटैक्टिक जरूर बोलोगे। उसके फायदे क्या हैं? ओपीडी के में आप करते हो, नॉन इन्वेसिव होता है, ठीक है, कोई रिकवरी पीरियड नहीं होता है, ठीक है, सीजर कंट्रोल इंप्रूव हो जाता है। कौन सा इसका सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज ए लेटेंसी पीरियड ऑफ 1 to 3 years, और उसमें जो है 1 to 3 years में द रिस्क ऑफ ब्लीड इज सेम एज दैट ऑफ अ नॉर्मल नेचुरल हिस्ट्री, 1 to 3% पर ईयर, ठीक है। और ऑब्लिट्रेशन रेट भी जो है इट इज 70 to 80% लेस देन विद सर्जरी, ठीक है। तो इस वजह से रेडियो सर्जरी जो है वो इसका बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है। दूसरा ये कि कभी कभी रेडिएशन नेक्रोसिस या एडेमा या सिस्ट फॉर्मेशन, ये डिलेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंडोवेस्कुलर का फायदा ये है कि आप स्पेशली जब करते हो तो मेन पर्पस आपका होता है टू प्रमोट सर्जिकल, टू फैसिलिटेट द सर्जिकल रिसेक्शन, ठीक है। जब आपका सर्जिकल रिसेक्शन का प्लान होता है तो 24 to 48 आवर्स बिफोर हैंड आप एम्बुलाइज करवाते हो। तो इसमें जो है एज सच बाय इटसेल्फ इट इज इनकम इनएडिक्वेट, ठीक है, और एज अ सिंगल ट्रीटमेंट अप्रोच इट इज रियली नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा, बेसिक टेनेंट्स में क्या होता है? जब आप सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी में आपको एवीएम, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो यू शुड हैव अ वाइड एक्सपोजर, you should occlude the firstly the feeding vessels, फिर आप ड्रेनिंग वेन्स को करते हो, फिर आप पूरी नाइडस को एक्सरसाइज करते हो टू प्रिवेंट रीब्लीड, टू प्रिवेंट सीजर्स, ठीक है। कोई आसपास जो नॉर्मल वेसल्स गुजर रही हैं उनको आप प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आपका जो है वो कोई एन्यूरिज्म एसोसिएटेड है तो उसको भी कोशिश करते हो कि क्लिप करो, ठीक है। अगर कोई बड़ा एवीएम है और मल्टीपल फीडर्स हैं तो आप उसको स्टेजिंग में भी कर सकते हो इन 2 or 3 stages। जो मैंने बात की नॉर्मल परफ्यूजन प्रेशर ब्रेक थ्रू की, ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोस्ट ऑफ स्वेलिंग और हेमरेज, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ ऑटो रेगुलेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक सर्कुलेशन से एक बड़ा हाई फ्लो और हाई प्रेशर का एवीएम निकालते हो तो वो बेसिकली यूज टू नहीं होता वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब वो इतना ज्यादा जो है वो ऑटो रेगुलेट अपने आप को कर चुका होता है। तो क्या होता है कि जब आप एवीएम निकालते हो फ्रॉम दैट सर्कुलेशन तो एकदम से जो है ब्लड प्रेशर उस जगह पे ऑटो रेगुलेशन की लॉस हो जाती है, वहां पे इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है, और उसी वजह से देयर इज अ चांस ऑफ हेमरेज, देयर इज अ चांस ऑफ स्वेलिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय रिमूविंग दैट नाइडस ऑफ द एवीएम, ठीक है। तो दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्री ऑप मेडिकेशन, जिसमें आप लेबिटोलॉल और प्रोप्रानोल, बेसिकली आप प्रोप्रानोल देते हो, इट्स अराउंड आई थिंक 20 milligram फॉर 3 days, four times a day, 3 days के लिए, ठीक है। So propranolol can decrease. So this was all about AVM. Any question यहाँ तक? There is another station on AVM as well, so we'll revise it there as well. कोई question, डॉक्टर हारून? मैम मैं कह रही हूँ अगर लॉन्ग केस आता है तो इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं? बस यही चीजें बतानी है हमने। यही चीजें होती हैं मोस्टली, ठीक है। यही चीजें आपसे क्या आता है लॉन्ग केस में? पेशेंट की जब आप हिस्ट्री लेते हो, एग्जामिनेशन लेते हो, हिस्ट्री जो होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। हिस्ट्री में आप से ज्यादा जो है वो शॉर्ट अगर है हिस्ट्री तो आप वेस्कुलर रखते हो ज्यादातर कॉजेज, तो वेस्कुलर में फिर आपसे पूछते शॉर्ट है, हैं सडन है, सडन अगर सडन शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, यंग पेशेंट, और उसमें यंग सीजर्स की एज। हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है शॉर्ट केस में आप हिस्ट्री लेते हो सारी, उसमें लॉन्ग केस में ये सारी हिस्ट्री लेते हो। एग्जामिनेशन पे जो है वो आपसे यही सारे डिफरेंशियल्स पूछते हैं। वेस्कुलर आप टॉप पे रखते हो, सेकंड पे फिर आप नियोप्लास्टिक रख सकते हो या कोई इन्फेक्टिव रख सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो है जब आपसे लॉन्ग केस पूछते हैं तो उसमें वही फिर इन्वेस्टिगेशंस पूछते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो एमआरए, डीएसए, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें आप तब भी सीखोगे जब आप रिपीटेडली इन एनजीओस को देखोगे, तो वही उसी पे इंटरप्रेट करेंगे। जब उस पे इंटरप्रेट किया तो आपसे उस वेसल के जो फीडर है उस वेसल के बारे में उसके नेट में पूछ सकते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर एसीए है तो एसीए के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, ठीक है। एसीए की जो मतलब प्री कम्युनिकेटिंग, पोस्ट कम्युनिकेटिंग, प्री कैलोजल, सुप्रा कैलोजल, पोस्ट कैलोजल, 5 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एसीए के आपको सेगमेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर एमसीए का फीडर है तो एमसीए के सेगमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। एमसीए की जो है उसका फीडर्स जो है उसके पूछेंगे। अच्छा, एसीए की ब्रांचेस अगर है, एसीए की ब्रांचेस में पेरी कैलोजल, सुप्रा जो है, मार्जिनल, इस तरह की जो उसकी 5-6 ब्रांचेस हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जब एनाटमी या उस पे एंजियोग्राफी पे बात आएगी,
अच्छा, तीसरा, जब आपसे ये सारा पूछ लेंगे उसके बाद आपसे यही सारी चीजें कि आप स्पेसला मार्टिन क्या होता है, लॉटन यंग क्या होता है, उस पेशेंट में ग्रेडिंग पूछेंगे कि उस पेशेंट में आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि स्पेसला मार्टिन इसमें क्या है, लॉटन यंग क्या है, और उसी बेसिस पे फिर वो मैनेजमेंट पूछते हैं। मैनेजमेंट में वही आप चीजें बताते हो, सर्जिकली एमिनेबल है तो आप सर्जरी का बताओगे, सर्जरी के स्टेप्स में आप जैसे मोस्टली आप जितने भी एन्यूरिज्म में एवीएम अगर सुपरफिशियल पड़ा हुआ है तो आप उसी जगह की वाइड क्रेनियोटमी करोगे, वो डिपेंड करता है कहाँ पे आपका एवीएम है। उसके बाद जो है एवीएम के जो रिसेक्शन के जो सारे बेसिक रूल्स हैं वो सारे इसमें अभी हमने डिस्कस किए, वो आप करोगे। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑप ही नॉर्मल प्रेशर परफ्यूजन ब्रेक थ्रू का पूछते हैं। पोस्ट ऑप आप एनजीओ कब करवाओगे, जैसे आपने कंप्लीट रिसेक्शन किया है इनाइडस का, आपको कैसे पता चले कि पोस्ट ऑप पूरा रिसेक्ट किया है या नहीं, तो आप इमीडिएट पोस्ट ऑप एनजीओ करवाते हो। लाइक विद इन 24 to 48 आवर्स आप एनजीओ करवाते हो देखने के लिए कि आपने रिसेक्ट किया है पूरा या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप सर्वेलेंस पे फिर आप हर मतलब पहला करवाते हो 1 साल के बाद, फिर दूसरा आप 5 साल के बाद इस तरह करवा सकते हो, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एमआरएनजीओ करवा रहे हो तो एमआरएनजीओ फिर आप 6-6 महीने बाद करवाते हो, ये पूछ सकते हैं। और एसआरएस की इंडिकेशंस क्या हैं, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और ये यही आई गेस यही सारी चीजें होती हैं। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ पूछ सकते हैं या पूछते होंगे। सही। ठीक है, तो इसी नहीं, पोस्टर वो डीएसए ही कराना है या एमआरआई भी करा सकते हैं ना, मतलब उनका नॉन इन्वेसिव वगैरह? नहीं, डीएसए ही करवाते हैं, मोस्टली डीएसए ही करवाते हैं। हम्म लेकिन अगर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो रही है या किसी वजह से आप नहीं हम्म करवा पा रहे हो तो फिर एमआर एनजीओ कैन बी एन ऑल्टरनेटिव। हम्म। यही पूछते हैं, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि कुछ है। ठीक हो, ठीक हो। ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना हो, और शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन? ओके, सो who is going to volunteer for the next case, next talk station? There's a hint that the next talk station is similar to the one that we've discussed. So, yes. Who is going to volunteer? Anyone? Should I choose randomly? मैं एक्चुअली मैम एग्जाम करीब है ना, इसलिए सारे टेंशन में, आप खुद ही जब चूज कर लें सब। Dr. Sugra? No. Dr. Sugra, I guess she doesn't want to. Dr. Manik? Okay, ma'am. I don't want to do, but that's okay. I'll try. Okay. How are you? Fine? I'm good, ma'am. Okay. Thank you. So, Dr. Manik, yes, this is we have Thank studied you. just right now, so I hope it won't be difficult for you. So, a 36-year-old woman presented with headache and focal fits affecting her language and the right side of her body. So, read the images and interpret the findings. Okay, ma'am. There are two images. It looks like DSA. One on the right side is right ICA injection in AP view, I mean lateral view, and one on the other side, left side is, I mean that's lateral and that's AP view. Oh, In is this it arterial right phase. ICA injection? Oh, sorry. It's a left ICA. Sorry. Okay. That's right. It's a left ICA injection in the arterial phase, where we can see there is a blast of flow abnormal vessel. Majority of feeders from ICA itself and MCA. So most likely it's and the size is approximately around more than 6 centimeters, I guess. Okay. So I think most likely it's just like before AVM, and there is some venous drainage in the early arterial phase, which looks like posterior drainage and also as well as an inferior drainage, superior and inferior drainage. So it looks like a superficial or a deep drainage.
One looks like superficial and one looks like deep drainage. Okay. The one going towards the superior sinus looks like superficial, and the one behind looks deep. Okay, so if I say this is the draining vein, this is it now Yes, ma'am. superficial or deep? Looks like vein of Lave. So I'll Vein of Lebe think is that a as superficial. superficial vein or a deep vein? Superficial, ma'am. So you That's a say, superficial vein, ma'am. okay, so you say that this is a superficial drainage? Yes, ma'am. Okay, and is this cortical, an eloquent area or not? Yes, ma'am. Okay, It's in the cortical eloquent area. which eloquent area? Most likely frontotemporal region. Okay, what eloquent area is present here? Broca's area. Okay. Okay, so how will you manage this patient? So the size looks like around, it's large enough. So I would put this at like a 3, and it has superficial drainage 2. That means 4. And it's in the eloquent area, it's 5. So it will be splenomegaly grade 5. The patient is 36 years old. So I'll add Lawton and Young supplementary. Patient has headache, then I'll need to see MRI or CT scan whether there is bleed or not. And then Or suppose that there it's is a a grade bleed. 4, 5. There is a history of and ICH like a year ago. Bleed. And this looks like a diffuse. So I think this patient needs a multimodal approach, still grade 4, grade 5. And the patient has already developed a language and neurological deficit. So even though it's a grade 4, grade 5 AVM, I think we can undergo and take her for surgery. Okay. So what's your final plan in this patient? I'll try to embolize first and then do surgery, ma'am. Okay. So any role of awake surgery in this patient? Yes, ma'am. But patient has affected language. So if I'll assess her communicating skill, if she has a preserved communicating or comprehension, then I'll think about being awake. Otherwise, it will be quite difficult to do awake. For speech, however, for motor also, we can do awake with the cortical mapping, Okay. which we don't need to do awake, basically. So I don't think there is role of awake surgery here. Okay. Okay. So Dr. Manik, you were very good. I mean, I think जो थोड़ा पहले पढ़ाया तो उससे थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो Yes, गया. ma'am, it helped. ठीक है. Yeah. Okay, so very good. ठीक है, you identified it right. This is the lateral view. This is the AP view. Okay, this is the DSA, and this is left ICA injection, and you are seeing the arterial phase. You identified it right that you have to tell that there is a nidus of a bunch of vessels, and it is arising at the in the territory of the left MCA. It has superficial, you can say that there is superficial as well as deep drainage. Yes, you are right. Okay, and the drainage is seen in the venous phase. Okay, sorry, arterial phase. उसके बाद जो है दिस इज मतलब हाउ इट अपियर्स. ठीक है, यहाँ पे सुपरफिशियल भी ड्रेनेज है, थोड़ी सी डीप ड्रेनेज भी है, तो यू कांट एग्जैक्टली से. अच्छा, साइज का डॉक्टर मानिक यू आर सेइंग इट्स मोर देन 6, सो इट इज नॉट मोर देन 6, it is like between 3 to 6. ठीक है, थोड़ा सा more than 6 is very very large, very huge. ठीक है, so this is more than 3. On a safe side you can say it's more than 3. सो इन अ वे के मोर देन 3 पे आपका फिर ये कट ऑफ हो जाता है कि आप स्टीरियोटैक्टिक नहीं कर सकते हो. एटलीस्ट यू कैन से मोर देन 3 बट लुक्स लाइक लेस देन 6. ठीक है, बट स्टिल यू से द एग्जामिनर कि आई नीड टू नो द एग्जैक्ट
साइज ऑफ दिस एवीएम। ठीक है, इसमें मैंने ज्यादा कुछ और डिस्कस इसमें ऐड नहीं किया, बिकॉज सारा हम एवीएम डिस्कस कर चुके हैं। दिस वाज जस्ट एन एडिशनल स्टेशन टू मेक यू ओरिएंट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एवीएम। अच्छा, इसमें जो मेन पर्पस था ये स्टेशन रखने का, वो ये था कि आपको ये आइडिया हो कि जब आपका इस तरह का एवीएम हो जो कि कॉर्टिकल पे एलोक्वेंट कॉर्टेक्स पे और लेफ्ट साइड पे हो, तो यू कैन गो फॉर अवेक सर्जरी। ठीक है, अवेक सर्जरी में आपको अवेक क्रेनियोटमी, इस स्टेशन पे भी आपको अवेक क्रेनियोटमी के स्टेप्स पूछ सकते हैं। सो यू शुड बी अवेयर कि सिर्फ अवेक क्रेनियोटमी का ग्लायोमास में रोल नहीं है। अगर एवीएम आता है एलोक्वेंट एरिया पे, लेफ्ट साइड पे, लैंग्वेज या मोटर पे, तो आपसे अवेक क्रेनी का पूछ सकते हैं। अवेक क्रेनियोटमी वी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लास्ट मॉड्यूल, सो आई वोंट बी गोइंग इनटू रिपीट दैट, लेकिन आपको थोड़ा ये आइडिया हो। दूसरा ये कि जो आपका एवीएम आता है, इसमें एमसीए की टेरिटरी में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस स्टेशन पे आपसे और सवाल कौन से हो सकते हैं, एमसीए के सेगमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, अब ये कौन से एमसीए के सेगमेंट पे, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि एमसीए की ये आपको बाइफर्केशन नजर आ रही है। ठीक है, जब आपको बाइफर्केशन नजर आती है तो बाइफर्केशन के बाद का जो सेगमेंट होता है, तो यू कैन से यू कैन एग्जैक्टली टेल कि ये M3 है या M2 में आ रहा है, बट यू विल एटलीस्ट टेल कि ये बाइफर्केशन के बाद आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली वुड बी एन M2 और M3 सेगमेंट। ठीक है, कॉर्टेक्स की तरफ नहीं जा रहा है इतना। ठीक है, यू वोंट से कि ये M4 सेगमेंट में, सो यू से प्रोबेबली M2 और M3 सेगमेंट। तो इस पे आपसे वाइवा पे और ये चीजें पूछ सकते हैं। सो दिस इज प्रिटी मच इट। ठीक है, ये स्टेशन रखने का ये पर्पस था मेनली। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट स्टेशन। हु इज गोइंग टू वॉलंटियर फॉर द नेक्स्ट स्टेशन? एनीवन? I think I have to choose randomly today. Doctor, wait. Doctor Mustafa. Doctor Mustafa, are you here? He's not here. Doctor Mishra. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, Doctor Mustafa. How are you? Alhamdulillah, I am fine, man. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, next station, are you ready for it? सर मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ जरा गाड़ी ना, अच्छा तो अच्छा, ड्राइव काइंडली कर। मैम इसकी मुझे रिकॉर्डिंग तो आई एम वेरी सॉरी मैम। ओके ओके, वो आप वो मिल जाएगी। ओके ओके। सो डॉक्टर मिशाल। ओके डॉक्टर मिशाल, आर यू हियर? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मैम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मिशाल, कैसे हैं? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र। चलें करें नेक्स्ट स्टेशन। जी जी मैम। Okay. Okay, Dr. Mishal. So, identify the following structures. Take a minute and then start. यस मैम। Okay. So, what is structure A? This one. मैम इज इट इज आइका, Okay. इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। What बी is इज बेसिलर। ठीक है? This C. सी इज सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। Okay. नो नो, C. ये कोई नर्व रूट्स लग रहे हैं। ठीक है, कौन सी हैं? हम्म, ये उससे नीचे होंगी तो 10th नर्व वेगस। Okay. What is this structure? वर्टिब्रल आर्टरी And this पाइका। pica. Okay, this structure. This is a complex. 7th 8th nerve complex। Okay. What is this nerve? This. 7th 8th nerve के ऊपर 6th nerve। Okay, very good. And what is this? ये पीछे से आ रही है। H. Structure H. नहीं। Now see again this one. It is coming from, सॉरी, यहाँ से आ रहा है। it's going all the way right here.
ऐसे ऐसे आ रही है। या आइका, ओके, ये आइका और ऊपर वाली फिर ए वाली पोस्टीरियर सेरिबेलर। posterior cerebral, are you sure? नो, So there are two vessels over here. एक एक ये ये होती है, ठीक है, एक और ऊपर से आती है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। वो, अच्छा, If you ये सुपीरियर सेरिबेलर है, ये फिर सुपीरियर सेरिबेलर है। excellent, ठीक, excellent, ठीक है। So okay, most of the structures you identified were right, ठीक है। So this is superior cerebellar, ठीक है। और अगर आप superior cerebellar इसको बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो इसके साथ नर्व होगी जो यहाँ पे लूप फिफ्थ कर नर्व। ये फिफ्थ नर्व है, दिस इज ट्राइजेमिनल, ठीक है। क्योंकि यही सुपीरियर यस मैम। सेरिबेलर यही लूप करके इसको जो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में इसका मसला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी। बेसिलार आपने सही आइडेंटिफाई की, ठीक है। ट्राइजेमिनल हमने कर लिया, वर्टिब्रल आपने सही की, ठीक है। ये अगर बिल्कुल ये पाइका है, ठीक है। ये जो वर्टिब्रल से आ रही है क्योंकि ये यहाँ पे इस साइड पे ये रही पाइका, तो दिस इज पाइका। अच्छा, उसके बाद सेवेंथ एट्थ कॉम्प्लेक्स आपने सही आइडेंटिफाई किया। जब ये आप आइका जब बोल रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था जब हम सीपी एंगल पढ़ रहे थे, तो जो क्रॉस शेप जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ऐसे जो नर्व इसको क्रॉस करी होती है, आई एम शोइंग यू वंस अगेन। ये नर्व इस तरह जा रही है और ये आर्टरी इस तरह आ रही है, ठीक है। जो इस तरह क्रॉस बनता है ना, वो आपका हमेशा वो आइका और सिक्स नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई। जी। दूसरा तरीका जो आपने कहा बिल्कुल कि सेवेंथ और एट नर्व के ऊपर जो नर्व होगी वो सिक्स नर्व होगी, एक ये भी तरीका है। एक तरीका ये भी है जो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एच जो है वो फिर आपने सही कहा कि वो आइका है। सो प्रिटी मच जो है सही सारी आइडेंटिफाई की चीजें। तो इसमें जो है इस पिक्चर का पर्पस वेस्कुलर में रखने का ये है कि आपको पता हो कि जो सुपीरियर सेरिबेलर है वो यहाँ पे लूप करी है तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया करवाएगी। इसी तरह से आइका के मैंने सारा आपको इस तरह से लूप दिखाया, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से आके ये पूरा ऐसे लूप कर रही है ऐसे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये सेवेंथ नर्व की तरफ जो है इस तरह लूप करती है तो इट कैन कॉज हेमीफेशियल स्पाज्म। अच्छा, दूसरा इसको दिखाने का ये मकसद था कि अब जो है इसके बाद डॉक्टर मिशाल, आई विल शो यू दिस, ओके। So, Dr. Mishal, this is a 45-year-old male who developed lightning onset of an explosive headache followed by coma. Now, can you identify what is it? Yes, ma'am. It is a baselative aneurysm. Basilar aneurysm. Okay. So now what are these arteries? Posterior cerebral, Shabash. ठीक है. What are these? superior cerebellar, Cerebellar. Okay. What are these arteries? inferior inferior cerebellar, Cerebellar artery. ठीक है. And what are these arteries? pica, Pica. posterior inferior cerebellar ठीक arteries. है. And this is basilar artery. Okay. And these are Yes, ma'am. vertebral arteries. तो वो एनेटमी Yes, की ma'am. तस्वीर दिखाने का ये मकसद था कि आपको इन चीजों से ओरिएंटेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, ओके। सो डॉक्टर मिशाल, हाउ विल यू मैनेज बेसिलर टिप एन्यूरिज्म? Mostly in case of the posterior circulation aneurysms, we go for the endovascular treatment. Okay. But Yes, if you ma'am. plan on going surgically, how will you Yes, ma'am. approach? If we, ma'am, we go for the pterionar, Okay. pterional craniotomy. We turn the head to the contralateral side 30 degree, Okay. and then we uh, give the incision pterional incision. Then we open the dura towards the curvilinear dura open. Then split the sylvian fissure and retract the temporal lobe inferiorly to expose this area. And then we first identify the is it is above the supraclinoidal or below the posterior clinoid. In case of it is above the posterior clinoid, we go there Okay. and try to clip this. Okay. Will you approach the dome first or neck first? Ma'am, first I try to take the proximal control, Okay. and first I dome, sorry, neck.
अच्छा, ठीक। ओके डॉक्टर मिशाल, यू आर वेरी गुड। ठीक है, ये सारी मैंने इसमें लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा ये पिक्चर एक और मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, लेकिन थोड़ी सी इसमें एनेटमी एबरेंट है तो मैंने ये नहीं लगाई, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज बेजलार। ठीक है, दीज आर वर्टिब्रल। ठीक है, ये सबको आता है। ये पाइका आ रही है, लेकिन ये पाइका जो है यहाँ पे इस जगह पे हाइपोप्लास्टिक है। ठीक है, आइका जो है वो ये है, ये वाली है, लेकिन यहाँ राइट साइड पे आइका हाइपोप्लास्टिक है। तो थोड़ी सी ये एनेटमिकली सही नहीं थी। बाकी सेरिबेलर आर्टरीज ये हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो इस तरह से बाइफरकेट हो रही है, इसलिए मैंने ये वाली पिक्चर भी रखी थी। ठीक है, ताकि आपको पोस्टीरियर सेरिब्रल दिखा सकूं। अच्छा, उसके बाद ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसमें वही चीजें, ये आपका बेसिलर टिप एन्यूरिज्म, पोस्टीरियर सेरिब्रल, सुपीरियर सेरिबेलर, बेसिलर, आइका एंड पाइका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताना होगा। बाकी सारी चीजें जो हैं एन्यूरिज्म की, वो डॉक्टर बाबर विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी चीजें। सो अभी तक कोई कंफ्यूजन? एन्यूरिज्म की और डिस्कशन होगी। सो रेस्ट देन दैट, कोई एंजियोग्राम में कोई पोस्टीरियर, जो बेसिकली मेरा मकसद है मैं आपको पोस्टीरियर सर्कुलेशन थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ऑन एनेटमी एज वेल एज ऑन एंजियो। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? should we move on to the next station? Okay, who is going to volunteer? This would be the last station from my side, and I'll be signing out. Oh, because after this station we'll take a break, and then Dr. Babar will continue. So this is the last station मेरी तरफ से. So who is going to take the honor? Who is going to do the honors? The last station with me. Anyone? Okay, I have to choose, right? So, Dr. Who is Infinix X6881? Dr. Ajit, are you here? Dr. Ajit? Dr. Aisha? Dr. Aisha, are you here? Dr. Amna? Dr. Prakash? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Are you here? Yes, ma'am. Okay, Can you Dr. hear me? Prakash. So you will do the last station with me, right? Yes, ma'am. Okay. Oh, Thank you for the. okay. Okay, so Dr. Prakash, this is a 28-year-old woman who developed an onset of explosive headache followed by photophobia and vomiting. Please read the images and interpret the findings. These are the DSA images, AP and lateral view. The first one is the AP, and the second one is the lateral view of left internal carotid artery injection, the arterial phase, in which we can appreciate uh, lesion of vascular lesion at the ACOM, likely ACOM, ma'am, between the A1 and A2. What kind of vascular lesion? It's likely an aneurysm directed upwards superiorly. Okay, okay. So it's an ACOM aneurysm, right? Yes, ma'am. Okay, so how will you manage this patient? Mm. We can do it both, ma'am, open surgical or endovascular.
Taking into account the 28-year-old, the open surgery might also be a good option since it has less rebleeding and less retreatment in the long term. Okay, So we can do. Okay, you'll go for, you're preferring surgery? Yes, ma'am. I'm Okay. doing a surgery. So how will you approach this lesion? With the pterynal incision, ma'am, I will consult the patient regarding the need of surgery, and I will, if she agrees, I will take her for the surgery. The approach will be pterynal. I will keep the patient supine, head tilted to the contralateral side by 30 degrees, with slight extension so the malar is up. Then I will do the standard pterynal craniotomy with slight anterior, more to the frontal region. Followed by the dura, which is based on the sphenoid. Also, I might add rongering of the sphenoid wing before opening the dura, then open the dura. And then I will start the sylvian dissection from proximal to distal, then visualizing the Proximal to distal or distal I to see proximal? from deep to superficial, ma'am. Okay. Proximal to distal. Okay. Deep to superficial, and then retract the frontal lobe anteriorly, then visualize ICA, then chase, then follow it to reach A1, then the ipsilateral A2, then contralateral A2, then the contralateral A1, and in the meantime, the aneurysm will visualize in that area. Then I will also find other perforators, the most important being recurrent artery of Hübner's and other perforators in the region. Then I will first dissect around the neck of the aneurysm, followed by neck of the aneurysm. And I might require a proximal control depending on the situation, for which the ipsilateral ICA can be clamped no more than 5 minutes, followed by the clipping of the aneurysm. Okay. Okay, so if you go perional, what are the advantages and what are the disadvantages? Pterynal is a standard approach which we are very familiar with. Every neurosurgeon is very familiar with, and I can get the proximal control easily in pterynal as compared to the frontal approach, and also the dissection of the neck will be easier as I will first reach the neck and not the dome. Okay, and what are the cones of pterional approach? And frontal sinus, yes, ma'am. And there is no opening of the frontal sinus in pterynal approach. However, in anterior, the frontal sinus might open. Sorry, ma'am. So that's a pro, right? I'm asking about what are the cones of pterional approach? If the aneurysm is directed towards the side, for example, if I'm going to left, if it's directed to the left, then it might be difficult to dissect the dome of the aneurysm, and there might be risk of rupture, intraoperative rupture. In that case, you can approach it from the left side, won't you? yes, ma'am. Okay. So if, for example, you are going pterionally and you don't have enough space, so what are the different techniques to increase the exposure? I could do a gyrus sector resection, ma'am. One other I could convert into orbitozygomatic approach. Okay. And any other? Other than I will open sylvian dissection. I will do this a sylvian dissection more. I can open wide sylvian dissection for the further retraction of the frontal lobe. Okay. Okay. Oh, Dr. Prakash, you are excellent. Excellent. Very good. I'm very happy. Thank you, ma'am. Okay. So your last. Okay. So very good, Dr. Prakash. You've covered almost everything. Okay. Once you have any hemorrhage, subarachnoid hemorrhage due to an ACOM aneurysm, you have this bleed in the gyrus rectus. Okay. So the standard, as you said, pterional approach. Okay.
राइट ही करते हैं एक्सेप्ट फॉर लेफ्ट क्रेनी। जब आप तब करते हो जब एक फॉर्म एन्यूरिज्म को ऐसा हो कि उसका ज्यादातर जो है वो राइट की तरफ हो डोम, ठीक है। सो या डोमिनेंट लेफ्ट A1 फीडर हो या लेफ्ट साइडेड एन्यूरिज्म हो, देन यू आर गोइंग टू अप्रोच द लेफ्ट टेरियोनल पेरियोटमी। एंगल्स आपको पता हो, ठीक है। पोस्टीरियर जो भी हैं आपके पीकॉम के बेजिलार के, उसमें आप डिग्री 30 डिग्री करते हो। मिड लाइन के लिए आप 45 डिग्री, एंड जो एंटीरियर जैसे एकॉम एन्यूरिज्म है उसमें आपकी 60 डिग्री हेड रोटेशन होती है। माइक्रो सर्जिकल डायसेक्शन बिल्कुल सही बताई, ठीक है, कि इस तरह से आप विजुअलाइज करते हो, ऑप्टिको कैरोटिड सिस्टम को ओपन करते हो, CSF थोड़ा ड्रेन करते हो। पहले आप ICA को ढूंढते हो, देखते हो, ICA के बाद आप उसको ट्रेस करते हुए A1 की तरफ जाते हो, A1 को फिर ट्रेस करते हुए A2 एंड देन कॉन्ट्रालेटरल A2 और फिर प्रॉक्सिमल जो है मतलब कॉन्ट्रालेटरल A1 आइडेंटिफाई करते हो, और इसी बीच आपको एक फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। जगह अगर आपको एक्सपोजर इंक्रीज करता है तो गायरस रेक्टस के अराउंड 1 सेंटीमीटर आप कर सकते हो कॉर्टिसेक्टोमी, ठीक है। तो उसमें आपको जो है थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। बाकी FTOZ अप्रोच है, वो आप उसके ऑल्टरनेट टेरियोनल के ऑल्टरनेट आप वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी सिल्वियन फिशर तुम वैसे ही ओपन कर रहे होते हैं। कौन से क्रिटिकल आर्टरीज आपको बचानी है, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर आपको पता हो, और स्मॉल एकॉम परफोरेटर्स तो ठीक है, लेकिन ये आर्टरी आपको जरूर पता हो। इन एकॉम एन्यूरिज्म, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर, एंड इन पीकॉम एन्यूरिज्म्स विच आर्टरी, पीकॉम एन्यूरिज्म में कौन सी आर्टरी होती है, एनीवन? Medial and posterior corridor. यस, मीडियल पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है। तो ये जो है आपको, इवन एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी आई गेस दैट आल्सो, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि आप कौन सी इसको करते हो, सेव करते हो, ठीक है। सो दिस इज अ बोनस स्टेशन। एंड डॉक्टर प्रकाश, just tell me where is the aneurysm? Uh, I see aneurysm, ma'am. It's a cavernous splenoid. Okay. Splenoid segment. Okay, Splenoid I'm segment. giving you a hint. This is the AP view, right? Right ICA injection. Yes. This is the ACA, this is the MCA, and this is the lateral view. Again, these are the MCA branches, and this is an aneurysm. Ophthalmic. Ophthalmic. Ophthalmic would go posteriorly. This is anterior. Oh, no. This is the ophthalmic artery. Anterior. You are saying that let me show you. Let me show you. This is the ophthalmic artery, right? This is the ophthalmic artery. That's not ophthalmic. We are posterior. So PCOM. PCOM aneurysm, ठीक है। So this is PCOM Yes, aneurysm. ma'am. So this is how you identify। थोड़ा सा PCOM aneurysm का भी जो है डॉक्टर अतिया, yes, PCOM aneurysm. So this is how you identify। इसका बस ये होता है, ये सारी वही चीजें, ठीक है। ACA, ठीक है, PCOM aneurysm, this is MCA। अच्छा, ये ophthalmic जो है ये आर्टरी है, ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई नहीं की हुई लेकिन उसमें। अच्छा, दूसरा PCOM में थर्ड नर्व पेल्स, ये भी सबको पता है। दिस इज what is this image, Dr. Prakash? This image is what? MRA. CTA or MRA? MRA, okay, ठीक है। MRA में, so I already showed you black vessels, white background DSA, white vessels, black background MRA, ठीक है। So here you can see again, this is the PCOM aneurysm, right? So this is the website that I got all these cases from। ये सारे cases मैंने इस website से लिए थे। It's a very good page। इस पे आप, इस पेज पे जाके लिखोगे एन्यूरिज्म्स या AVM, तो उसमें आप बहुत सारे 10-12 केस आ जाएंगे। ये सारे मैंने वहीं से लिए हैं। दूसरा, वेस्कुलर पढ़ने के लिए ग्रीनबर्ग इज इनफ। आई डोंट थिंक किसी और बुक की जरूरत है, ठीक है। बस आप एनजीओ ज्यादा से ज्यादा देखें, और बाकी थ्योरी जो है वो ग्रीनबर्ग में बहुत अच्छी लिखी हुई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैम एकॉम के लिए हम इंटरहेमिस्फेरिक अप्रोच नहीं कर सकते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसकी बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। आपने देखी है इंटरहेमिस्फेरिक? हाँ, हमारी वार्ड में करते थे, जैसे थोड़े बहुत देखी है मैंने ना। अच्छा, हम लोग टेरियोनल करते हैं ज्यादातर, तो टेरियोनल का जो है वो, और वैसे भी टेरियोनल ज्यादा आपको वर्क हॉर्स अप्रोच है, अच्छे से आती है, तो बेहतर है आप टेरियोनल ही करें। इंटरहेमिस्फेरिक में फिर आप फंस जाएं, उससे थोड़ा सा जो है, अगर आपने देखी है, आपके रिफ्लेक्सेस हैं उसमें, मतलब स्टेप्स आपको विजुअल्स इतने अच्छे आते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन से, अदरवाइज आई थिंक टेरियोनल इज अ बेटर चॉइस।
this case. Thank you, ma'am. Any other question? मैम फंक्शनल की आज ही कवर होगी फंक्शनल? हाँ, Dr. Baba will cover. So Dr. Baba will cover aneurysms, rest of the things about aneurysms, subarachnoid, a bit of orbit, and a bit of functional as well. So this was all from my side, and I Thank wish you, ma'am. welcome. I wish you all Thank you, good ma'am. luck, and I hope कि जो थोड़ा बहुत हमने किया है वो आप लोगों के लिए एक तरह से गाइडेंस आपको मिली होगी, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मिली होंगी, और इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह। अगर कुछ पूछना हो एनीथिंग, वी आर ऑलवेज हियर, एंड कोई किसी को भी वी आर ऑलवेज ऑन टेक्स्ट, एंड कोई भी मसला हो यू कैन टॉक टू अस एनी टाइम, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। बाकी इसके अलावा डॉक्टर बाबा, आर यू हियर? अभी मैं नमाज ब्रेक। हाँ, मैं वही कह रही थी कि विल Let's take a namaz break. ठीक है, सो विल एक ही साथ कर लें, मगरिब और असर का भी टाइम हो जा रहा था, तो विल कम बैक एट 6 आई गेस। ठीक है, ठीक है डॉक्टर बाबर। Okay, let's जी जी ठीक है। ओके ओके। All right, so who's going for the station one? Okay, it's a easy station, very common one, but very important at the same time, and a lot of questions can come from this station. So let's see who is willing to go for it. Dr. Prakash, he has already done 2 stations. Dr. Subra, Dr. Manik, Dr. Tayyeba. Yes, sir, I'll do it. Okay, Dr. Manik, let's do it. Okay, sir. Okay, this is your station. So read the scenario. Mhm. Pretty easy one. Oh. Yes, sir. Experience in lifetime. Yes, sir. Okay, This looks like. Sorry. Yeah. so what is your impression? Read the CT scan first. This is axial cut where we can appreciate there is this subarachnoid hemorrhage in the basal cistern and intrahemispheric as well as in sylvian cistern. So most likely it's a SAH. All right. So what are the different causes of subarachnoid hemorrhage? The most common one is traumatic, and the secondary causes can be because of rupture aneurysm. It can be also from AVM. Those are the three most common, sir. What other causes apart from the AVM and the aneurysm? Trauma is most common, sir. Okay, all right. So what are the investigations you will order in this patient? I would like to proceed with the CT angio, sir. All right. And what is gold standard investigation? DSA, sir.
What do you want to see in the CT angiogram? What I would like to see in CT angio, I would like to see the architecture of most common sites. Right. What are the most common sites of bleed or aneurysms? The most common is ACOM, followed by PCOM and MCSF. All right. So if there is bleed in the anterior interhemispheric sphere, so where is the bleed? Where is the ACOM? Oh, sorry, where is the bleed from? If there is a predominant SAH localized to interhemispheric fissure, then most likely it's ACOM aneurysm. Sometimes it ACOM could or be the from DACA? DACA, sir. Yes. All ACOM, right. sir. Okay. And what if there is bleed in the third ventricle? Mostly it's a basilative aneurysm. It could be also from PCOM, sir. All right. So how will you manage this patient? So I'll proceed with the angiography, most likely DSA. And then once first I would like to stabilize the patient, and based on patient's Huntington's score, then I'll obtain further detailed study of angiogram. And if patient is stable and Huntington's is less than 3, then I'll proceed with surgery, sir. Early surgery. What is Huntington's classification or grading? These are the clinical classification in case of patient with spontaneous subarachnoid hemorrhage, where we can classify based on patient's clinical stage, which start from 0 to 4, sir. So 0 for unruptured aneurysm, 1 for mild headache, 2 for headache and nuchal rigidity with the cranial nerve deficit, 3 for focal neurological deficit. Patient is stuporous. 4 is patient is comatose. Can you tell me what is the importance of Huntington's classification? Why do we classify? It will help us to predict 30 days mortality as well as vasospasms. All right. So is there any other classification method for the subarachnoid hemorrhage? Yes, sir. There are radiological classification like modified fissure, and another clinical classification like WFNS grading, sir. What is WFNS grading? It's basically the grading system based on GCS as well as some neurological deficits. It has also, I think, 4 or 5 category. Mm-hmm. Can you name them? Yes. What is the difference between 1 and 5? If GCS is 13 to 15 without neurological deficit, that's a grade 1. And if GCS is 9 to 12 without measured neurological deficit, that's a grade 2. And same GCS with measured neurological deficit. And if GCS is less than 9 to 7, and then 3 to 6. All right. So for suppose you have admitted this patient in the high dependency unit. Yes, sir. What will you order to the attending doctor? What would be your prescription like? What medications you will give this to this patient? The most important thing will be maintaining ICP, for which as well as I'll start with the prevention of vasospasm, prescribing nimodipine, and what else I can give. And if I'm delaying surgery,
Sometimes I can use Transtat, tranexamic acid. Yes, sir. That's the only thing I can think of. Okay, if you do not treat this patient, yes, sir. What complications patient can develop from here? What are the most common complications? The most common complication is re-rupture, which occurs within the first 24 hours, highest time, and within first week. So re-rupture and higher mortality from re-rupture. How will you prevent the rupture in this patient? By doing early surgery, sir. By maintaining the blood pressure? Yes, by maintaining the blood pressure, as well as doing early surgery, sir. Okay, what other complications patient can have apart from the rupture or rebleed? Patient can have stunt cardiac and pulmonary syndrome, sir. Okay. Common ones. And common ones increase ICP, leading to cardiorespiratory virus. More common ones. There are a lot of complications, 6 or 7 complications of subarachnoid hemorrhage. Hydrocephalus. Okay. How you would address the hydrocephalus in this patient? So there's two schools of thought regarding managing hydrocephalus in patient with the acute subarachnoid hemorrhage. Some believe that putting EVD is useful, and some believe that putting EVD and decreasing ICP will increase the risk of rebleeding. So after doing shunting or the EVD, how you are going to prevent the chances of rebleed? How I can prevent the chances of rebleed? Maintaining EVD, not allowing rapid decompression or rapid CSF release. Right. CSF drainage. Okay, so apart from rebleed, hydrocephalus, what other complications patient can have? I can't think of, sir. It's very straightforward, but I can't think of it. Okay, so there are a lot of it. So the patient can have the seizures. So you have to prevent the seizures. You have to give anti-epileptic to the patient. Then the patient can have one of the complications you already told, vasospasm. Yes, sir. Right. So how do you? What is vasospasm basically? It can be defined clinically and radiologically. If there is a deterioration of patient tissues without obvious radiological finding of ICP, and if we do angio, there is a decrease in vessel, caliber, right, compared to previous angio. Okay, so how do you treat it? When does the vasospasm occurs? The peak period starts from 3rd day to 7 days, but it can occur up to 14 to 17 days. Okay, so how do you treat the vasospasm? There are 3 ways, just like we do in stroke: hemodilution, hypervolemia, and maintaining the blood pressure. And if that does not help, then we can use some medications such as nimodipine chemical spasmolysis, as well as balloon angioplasty. All right. So you ordered an angiogram in this patient. There's an MCA aneurysm. How you are going to treat the patient? The most of MCA aneurysm, the choice of treatment would be microsurgical clipping, but depending on the branches or location of aneurysm, these days coil embolization can also be done.
but current standard of practice is microsurgical clipping surgery. All right. So what is the other advantage of microsurgical clipping? It has a lesser recurrence rate compared to embolization. What else? And it's like complete obliteration. And I think that's the only thing I can think. I don't know why. Right. And when do you prefer the embolization? When patient is older and not fit for surgery, and if the aneurysm is not located near bifurcation, or if there is no vessel passing through the aneurysm itself. All right. So in embolization, what material do you do? Method? It's liquid embolization, but mostly it's like coil embolization is used for aneurysms. Right. Okay, so Dr. Manik, you were very good, and you answered most of the questions right. But regarding the management and the complications, these are very important ones, and you need to review them again. Okay, sir. So this was the questions which I asked, and you answered most of them, right? So let's come to the etiology. Etiology, the most common one is the trauma, yes, but in the spontaneous subarachnoid hemorrhage, there is a long list of the disease. First on the top, obviously, is the aneurysms. Then there are the AVMs. This page has been taken from the Greenberg, so you can review these all conditions, including the pituitary, apoplexy, and there's a artery dissection, cerebral artery dissection, a lot of important ones in the etiology. Coming to the classifications, Hunt and Hess classification is very important, and you answered it rightly so. For the management purpose, if the patient is at the Hunt and Hess 1 or 2nd grade, we can proceed for the surgical intervention, whereas if 3 or higher, if the patient is at the 3 grade, we can wait. If the patient improves clinically, then we can proceed for the surgery, whereas 4 and 5, these are relatively risky going for the surgery, right? So another important implication of the Hunt and Hess classification is regarding the vasospasm. This is the WFNS grading system. So all three grading systems, the Hunt and Hess, WFNS, as well as the Fisher's grading, should be on your fingertips. So coming to now, when the discussion starts on the subarachnoid hemorrhage, most importantly, it goes to the complications. Like just I asked about the hydrocephalus, they can ask about in which patients you will go for the VP shunting, in which patients you will do the EVD, why, and how you are going to prevent the chances of rebleed by keeping the intracranial pressure within a limit. जल्दी से उसको rapidly decrease नहीं करना होता है. Then why does it occur? Because of the in the vessels, there's because of the mechanotrauma or because of the certain chemicals, there's the constriction of the vessels, and it can occur from the 3rd day till the 14th day with a peak on the 7th day. How do you diagnose it? Clinically, you diagnose it by looking at the patient. If the neurology worsens in the patient, or if a new neurological deficit occurs in the patient, and in the angiogram, you are going to confirm it if there is the vasospasm or not. How do you treat it? You treat it by the conservative measures such as the triple H therapy, hemodilution, hypervolemia, and hypertension. Whereas if this fails, then you have to approach it, or you have to intervene it. In the intervention, you can place the stent in the vessel that is narrowed, or you can intra-arterial, you can give the different drugs such as the calcium channel blocker. Nimodipine can be given intra-arterially, as well as you can give other
vasodilator agents. And this is the basically percentage of the occurrence of vasospasm according to the grades in the Hunt and Hess as well as in the modified Fisher grade, by which you can predict the chances of vasospasm. Coming to a very important discussion about clipping versus coiling. There are certain conditions such as the MC aneurysm. You will prefer the clipping versus the coiling because it has branches near the aneurysm, these branches, so it becomes very difficult to coil the MC aneurysms. Similarly, if there is an associated hematoma, so by doing the surgery, you can evacuate the hematoma as well as address the aneurysm. For the decompression as well as to address the neurological deficit, again there is a discussion over it. If there is a patient has a neurological deficit, it is going to improve more if you go for the microsurgery versus the coiling. Whereas there are certain conditions in which you cannot go for the surgery if the patient is old age, if the patient has deranged coagulation, if the WFNS or Hunt and Hess score is low. So in these conditions, you prefer the coiling, as well as the posterior circulation, particularly the basilar apex aneurysm, you will prefer the coiling. Coming to early versus late intervention. Early intervention obviously is going to reduce the chances of rebleed. It is going to facilitate the treatment of vasospasm as well as evacuation of the hematoma, which can cause the pressure effect and causing the neurological deficit in the patient. Whereas late intervention is preferred in those patients in which the GCS is poor, or if the infarct is present, or there is too much of the edema, so we'll wait till the edema subsides, then we can proceed for the surgery. However, if there is edema which is causing the midline shift, and obviously there are the pressure effects, so in patients where early surgery is preferred. Okay, so this brings us to the end of the station regarding the subarachnoid hemorrhage. If anyone has any question, they can ask. Dr. Manik, you want to ask any question? No, sir. That was okay, sir. Thank you, sir. Okay, you are good, pretty good, right? So let's go for the next station. Most of you have already seen it. So who is going to attempt it? It is from functional neurosurgery. बड़ा कम आता है, but it is an important potential station, and so one should be ready for it. From functional neurosurgery. Anyone want to volunteer for it? Dr. Mishal, Dr. Tayyiba? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Dr. Mishal? जी सर। Okay, so have you seen this instrument before? Yes sir। So what it is? Lexel frame। Lexel frame. Why do we use it? And this frame is used for many different reasons. In case of take the biopsy from the deep-seated lesions, for catheter placement, for DBS, for lesioning. Nice, very nice. So in DBS, in which conditions we use it and where do we use it? Can you tell me 2 or 3 indications? Yes, sir. DBS done in case of the movement disorders, which include Parkinson disease, dystonias. It is also it is do in case of the epilepsy, in case of depression, in case of obsessive compulsive disorders, in case of chronic pains. Okay, in particularly in Parkinson disease, where do we do the stimulation? Sir, we give the stimulation to the globus pallidus internus.
depending upon the symptoms. In case of tremors, Tremors where? tremors, thalamic stimulation we call. Where in the thalamus? Subthalamic nucleus. It is the ventral intermediate nucleus of the Yes, thalamus. VIM. Yes. Okay, can you tell me what are the contraindications for the using this instrument? Sir, contraindication if the patient have the coagulopathy, if the patient having any movement disorders already, Right. and the old age patients. Okay, old age is not a contraindication, but bleeding disorders or platelet count less than 50,000 Okay, sir. TBS. Okay, so besides the Parkinson, what are the conditions? Dystonia में कहाँ पे हम करेंगे deep brain stimulation? उसमें भी ग्लोबस पैलिडस पे लेते हैं. उसमें भी ग्लोबस पैलिडस पे लेते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि what are the possible complications? Yes, sir. The complications including the risk of the hemorrhage, the risk of the infection, the risk of the catheter displacement, the risk of the diplopias. If we not properly target the lesion, then the complication related to if we go posteriorly, then the patient complain of paresthesias, diplopias. राइट, मुझे ये बताएं कि आप पेशेंट को जो अप्लाई करने लगे हैं ये लेक्सेल, तो कौन से पॉइंट्स पे आप इसकी स्क्रूज अटैच करते हैं? सर इसके वो जो सुप्रा ऑर्बिटल करते हैं, मतलब सबसे पहले इसमें हमने स्कल ब्लॉक दी ना पेशेंट्स को, और उसके बाद इसके हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे और सुप्रा ऑर्बिटल साइड्स पे और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन. Right, 2 would be supraorbital, Yes, 1 sir. or 2 centimeter above the supraorbital ridge, Yes, sir. 2 behind the ear, and 1 would be posteriorly Back. placed. Yes, sir. Okay, nice. So you were good, Dr. Misha. You answered most of the questions right. These are the potential points where you can apply the screws. ये थोड़ा सा ear पे अंदर लगा दिया है इन्होंने. This will be placed just behind the ear. 2 points would be supraorbital. These are the indications, including the biopsy, catheter placement, electrode placement, lesion generation, evacuation of the intracerebral hemorrhage. But the most important one would be performing the radiosurgery, the deep brain stimulation, and for taking the biopsy. ये कुछ पॉइंट्स हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के. The common ones, Parkinson disease में subthalamic nuclei was previously the target, but nowadays we target the globus pallidus interna when the bradykinesia is predominant. Whereas if there is the tremors, also in the essential tremors, we go for the thalamus, where in the thalamus particularly it is the ventral intermediate nucleus. For dystonia, we target the globus pallidus. और इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने बताई वहाँ पे इट कैन कॉज द एडिमा, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और रिकरेंस हो सकती है. सो ऑल दीज आर द पोटेंशियल complications regarding the use of stereotactic or the deep brain stimulation. Let's move to the next station, which is a bit tricky one. Any volunteer? Dr. Sara, are you there? Dr. Harun?
Yes, sir. Yes, sir. ओके डॉक्टर हारून, आप करेंगे अटेम्प्ट नेक्स्ट स्टेशन? Yes, sir. Yes, sir. I can attempt. ओके, सो रीड द सिनेरियो. So the 45-year-old presented with a severe pain and redness in the eye on examination of his hostile and positive bruise. Yes, क्या sir. क्या इंप्रेशन है आपका डॉक्टर हारून? सर प्रोप्टोसिस है सर, और सर साथ केमोसिस भी है सर. सही, तो आपकी स्पॉट डायग्नोसिस क्या है? सर पर्स्टल ब्रूई है तो सर वो अपना सीसीएफ है सर. ओके, सो मुझे आप बता सकते हैं कि सीसीएफ की कितनी टाइप्स होती हैं? सीसीएफ सर एक सर ट्रॉमेटिक सर हो सकता है, ट्रॉमेटिक. उसके अलावा सर अपना वेस्कुलर. ये तो आप कॉजेस बता रहे हैं, टाइप्स भी हैं, कोई क्लासिफिकेशन इसकी? टाइप सर इसकी थी सर, मैं अभी सर ध्यान में नहीं आ रही. ठीक है. अच्छा, आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे फर्दर पेशेंट को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर यानी कि इसका हम कैरोटिड एंजियोग्राम और सर वैसे तो बेसिक नर्सिंग स्टार्ट करेंगे सिटी से, सिटी एमआरआई एंड देन सर कैरोटिड एंजियोग्राम और डीएसए. सीटी में क्या देखना चाह रहे हैं आप? सिटी सर देखना चाह रहे हैं कि कोई किसी वेसल की वजह से तो नहीं हुआ हुआ. राइट. हाँ सर. सीटी जी एंजियोग्राम में क्या देखेंगे आप? सर सिटी एंजियोग्राम में कि देखेंगे कि किसी वेसल की यानी कि वेसल का ट्रॉमा है, कोई एनोरिज्म रप्चर हुआ है या उसकी वजह से है, या ठीक है. कोई. और ओके. अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है इसमें? सर वो डीएसए सर. एंजियोग्राफी करवाएंगे, ठीक है. एंजियोग्राम. यस एंजियोग्राफी सर. में कोई मनूवर्स करते हैं हम सीसीएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ सर से लीकेज है? इसमें सर प्रोलॉन्ग्ड आर्टीरियल फेज होता है. कोई मनूवर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द एंजियोग्राफी? सर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आई थिंक सर ये अपना आर्टीरियल फेज का थोड़ा था, मुझे क्या आइडिया पर लॉन्ग आर्टीरियल फेज. राइट. अच्छा, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर वी विल आई विल एडमिट द पेशेंट in the ward and sir and start the conservative treatment like painkillers and then sir cover the eye, cover this left eye, and sir then I will investigate the patient and all the not available from starting the basic CT brain plan, then sir after this MRI brain with the IV contrast and orbit protocol, MRI brain and orbit, and then sir CT angiogram, and after that for proving sir DS. Then sir I will attend call from the from endovascular, uh, that if there's any procedure like for the embolization or sir and after this there endovascular procedure, then the surgical procedure is sir, अच्छा, एम्बोलाइजेशन के लिए अप्रोच कहाँ से करेंगे, कौन सी वेसल से? सर एम्बोलाइजेशन के लिए सर नॉर्मली तो कैरोटिड से सर. और अगर कैरोटिड से ना कर पाए तो? कैरोटिड से ना कर पाए तो सर दूसरा फेमरल वाला है सर वे. कहाँ से? फेमरल सर, फेमरल सर. फीमेल तो काफी या सर दूर दूसरा पड़ेगी. अपना रेडियल सर है, रेडियल से. ओके. ठीक है डॉक्टर हारून, you were good. Apart from the classification, which is very important, सर एक्चुअली you... मैंने अभी ना रिवाइज करने वाली थी, मैंने ये पढ़ा हुआ था लेकिन वो अभी ना रिवाइज करने वाली तो सारा मिक्स हो गया. जी जी, नहीं नहीं, you were good. You picked it nicely. So you described the findings, you diagnosed it correctly. Causes आपने इसके बता दिए. It could be traumatic, ruptured aneurysm, any tumor that is causing the damage to the artery. How you are going to manage it, आपने बिल्कुल सही बताया. इंटरवेंशन के ऑप्शंस इसमें, वी गो फॉर द एम्बोलाइजेशन, एंड एम्बोलाइजेशन के यूजुअली यूज द इंटरनल कैरोटिड. अगर इंटरनल कैरोटिड नहीं यूज कर सकते तो वी यूज द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड.
एक्सटर्नल कैरोटिड से भी नहीं कर पाते, देन वी गो फॉर द वेनस, ओनली देन वी गो फॉर द वेनस। वेनस में जो है चांसेस कम होते हैं, 20% सक्सेस रेट होता है एज कम्पेयर टू द आर्टीरियल। उसमें जो है हम ऑप्थेल्मिक वेन यूज कर सकते हैं विच इज द नियरेस्ट वन, बट अगेन इट्स अ वेरी नैरो कॉरिडोर, सो उसमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर मोर। अच्छा, इसमें हम दो मैनूवर्स करते हैं, लेट मी शो। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ the carotid cavernous fistula. It can either be direct, डायरेक्ट में आ जाता है A, when the internal carotid artery से directly there is the leakage of blood in the cavernous sinus. Type B, C, D are all considered indirect ones, or the low flow fistulas. In type B, again, there is the leakage from the internal carotid, but not directly from the carotid, but from any smaller branch of the carotid. Whereas in the type C, from the external carotid artery की किसी branch से there is the leakage. Whereas in the type D, the leakage is either fistula is from both the internal and external carotid artery की branches से होता है. But all these type B, C, and D are low flow. In case of the low flow fistulas, it can be left conservatively, and 50 to 60% of the patients are going to improve. Again, there are certain indications when you need to go for the surgery. Obviously, if it is the high flow, if the patient's vision is being affected or the extraocular movements are affected, in that case, you need to address it and go for intervention. Intervention के लिए embolization is the gold standard. While performing the angiography, there are two maneuvers. One is the Huber maneuver. Huber maneuver में हम क्या करते हैं कि the इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है हम उसको प्रेस करते हैं, एंड द डाई इज गिवन फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी। रिट्रोग्रेडली हम उसको फॉलो करते हैं एंड वी सी वेयर इज द लीकेज पॉइंट, और हम छोड़ते हैं कि इंटरनल कैरोटिड को सेम साइड की वो रिफिल करें। बाय रिफिलिंग इट वील सी द फिस्टुला की लीकेज पॉइंट कहाँ से है। There is another maneuver that is the Mehringer Hirschema maneuver. इसमें हम क्या करते हैं कि we give the dye in the internal carotid artery, whereas जो common carotid artery है उसको हम compress करते हैं ipsilateral same side की। तो जो हम dye दे रहे होते हैं internal carotid artery से, तो it is going to directly show us कि कहाँ से fistula बन रहा है, and it is going to confirm us the exact position of the जहां से टाई लीकेज होगी, मतलब दैट इज द पॉइंट जहां से फिस्टुला बना है। So both of these are going to help us in the management and further planning. Both of these stations were less common, इतना frequently आती नहीं है, but again these are very two important one potential stations जो एग्जाम में आ सकती हैं। Okay, we have two short cases for today. Both are very important and very interesting short cases. Okay, so who is going to attempt the first short case? Anyone who has not participated yet? It's an easy one.
Any volunteer? I'll do it, sir. Okay. Dr. Athiya? Yes, sir. Okay, all right. So let's do it. Yes, sir. Kindly examine the face of the patient. Tell me the important points that you are going to look for. After introduction, consent, I'll look at the face from front or from the side and from a superior view. And then I'll start with the examination of the examination of the eye. With the first, I'll palpate it. Then I'll see the temperature, pressure, two finger tonometry, and if it's compressible, non-compressible, pulsatile, cuff impulse, and then check the bruit. Look at the bony orbital margins. Then I'll measure the interpupillary distance, and then forward protrusion compared to the other one, and then visual acuity bilaterally, extraocular movements, and fundoscopy. Then I'll check the nose, oropharynx, and facial nerve, trigeminal nerve. Yes, sir. And then pronator drift and planters. All right. So you were excellent. Can you tell me why were you checking the nose? I mean, what could be the important things that you Any can fungal give you? infection, we suspect that since it seems like a case of proboscis, so it can be any fungal infection, mucormycosis. We'll see a black black mass in the nose or oropharynx. Okay. Apart from the infection of the fungal mass, what other potential diagnoses are coming in your mind on the basis of examination? Well, it depends. It's a pulsatile or a non-pulsatile proboscis. It's a non-pulsatile proboscis. Okay, then it's most likely more commonly a neoplastic region. It can be starting from eye, going behind optic glioma, optic nerve meningioma, schwannoma, then posteriorly we go sphenoid wing meningioma, and these are commonly in the neoplastic. Less likely Graves' disease or pseudoorbital tumor. Right. So what important points in the examination are going to give you clue regarding the localization of this particular tumor? Oh, first, if it's a pulsatile or non-pulsatile, and axial, non-axial proptosis, and whether there was any pain involved or it was painless. Other than that? Any history of immunocompromised patient? Cranial nerve involvement? वो कोई clue देंगे आपको? Yes, if it's involving the cavernous sinus, then cranial nerve, there will be ophthalmoplegia, and along with that, decreased sensation in V1 and V2. Okay, so you also want to check completely the trigeminal nerve and particularly facial nerve as well. Yes, in sir. the examination of Yes. the face. Okay, how you will proceed? Okay, we would like to order the targeted specific examination investigation like MRI brain and fat suppression images along with orbit. MRI brain and orbit fat suppression images. All right, so let's see the MRI of this patient. Can you read the MRI, interpret it? Yes, sir. On the base. Okay. On the right side, we have an MRI brain, T1 weighted image with contrast, axial cut. It's showing a homogeneously enhancing lesion, which is well circumscribed and is involving the arising from the base of the skull and involving causing a compression on the temporal temporal lobe, and also on the extending into the optic and extending across the optic canal. On the sagittal cut, the lesion has a dural tail attachment and has a dural tail sign, and it's arising from skull base. Anterior screen, not the cranial fossa. I cannot read that sagittal image very properly. Okay, so we need to see the other cuts as well to see where it is originating from. Yes, sir. Okay, let me make it a bit easier for you. If it is arising from the sphenoid wing, yes. How do you classify the tumors arising from the sphenoid wing? So the broadly classification, it has unclick meningioma and globoid meningioma. Then globoid is further divided into three: inner clinoidal, then alar, and then we have a trional meningiomas.
ऑलराइट, सो इसमें और कोई इन्वेस्टिगेशन आप करवाना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम MRI? I would like to see the CT, brain, and I also like to order angiogram. CT में क्या देखना चाह रहे हैं? Bony involvement. Since I'm suspecting to be meningioma, it will cause, and it's more on the medial side, it will cause hyperostosis of the sphenoid wing and anterior clinoid process. It will help me deciding the surgical plan. एक और इम्पोर्टेंट चीज आपने देखनी है CT स्कैन में? Hyperostosis of the bone and कौन सी बोन की? sphenoid wing देख लिया, and anterior clinoid process. क्लिनॉइड भी देख लिया, Yes. ऑर्बिट की रूफ, Yes. Orbit. Sorry. ऑर्बिट की रूफ चेक करनी है कि जी। कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। ओके, अच्छा, एंजियोग्राम में क्या देखेंगे आप? वेसल्स। Vessels. Yes. ओके, उसका क्या एडवांटेज है? One, it will tell us about the blood supply and any surrounding vessels which we have to see during surgery. Since it seems like it's very close to the clinoid, and there we have cavernous sinus and all the small and vessels like ACA branches. So we have to preserve those branches. Okay, so how you are going to treat this patient? Since can I see this? The patient has a vision loss or the vision was intact? Patient's vision is intact, but the ocular movement is affected. Okay, first I'll consult the patient regarding the disease, and we have to tell them that there is a tumor and we need to operate it. I'll admit the patient, get the baseline investigation, prepare the patient for the surgery, and we will go for the surgery. In this, should I tell you the approach? Yes. Okay, we will go for the trional approach, and along with the de-roofing of the superior orbit, along with the de-roofing of the orbit and an anterior clinoid process removal for the complete dissection of the tumor. जो आप बता रहे हो ट्यूटोरियल अप्रोच प्लस उसमें आप ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई स्पेशल नेम देते हैं हम इस अप्रोच को? Trional along with OZ, orbitozygomatic OZ removal. Okay, so tell me the steps of the surgery. Okay. We have to, after cleaning and dripping intubation, the patient will be in supine position with head elevated slightly and turned towards the right side. And after my cleaning dripping, we will give us incision starting 1 centimeter anterior to the tragus, going upwards and then towards the slightly crossing the midline. And after the skin flap will be raised in 2 flaps. First in the skin and subcutaneous fat along with fascia, and then muscular flap. Skin flap will be reflected anteriorly, while the muscle flap will be directed downwards to provide the better exposure. Then doing the trional craniotomy with the 2 burr holes, one superior to the root of zygoma, other at the level of McCarthy burr hole. We will do the craniotomy. Then after the and along with that, we can do 1 step OG or 2 step. Where do you do the McCarthy burr hole? It's 5 mm. Yes, it's 5 mm posterior to the frontozygomatic suture along the at the junction of frontozygomatic suture with the superior temporal line. 5 mm posterior to it. Right, ठीक है। अच्छा, 2 बार करेंगे और फिर आप उसको क्रेनियोटमी करेंगे अपना। Along with the removal of the orbit. What is the advantage of McCarthy burr hole? It helps in reaching the base of the sphenoid easily after removal of it. और कहाँ जा सकते हैं आप McCarthy burr hole से? Orbit. We can use it to remove the assess the orbit. So that is the main advantage जो यहाँ पे हम perform करेंगे. Along with the middle cranial fossa, anterior cranial fossa, we can also go into the orbit as well. Okay. After doing the craniotomy, what would be the next step? Extradural dissection of the sphenoid base, and along with the removal of anterior clinoid process. And then once the clinoid process is removed, orbit is deroofed, bony work is done, we will open the dura in a C-shaped manner with the base towards the with the base of dura towards the base of the skull. And after that, we will do the sylvian dissection
and open the sylvian by preserving the neurovascular structures and approach the tumor. We will start the internal external debulking by cauterizing the tumor capsule and internally debulking while devascularization and dissecting the tumors from the surrounding. And once the tumor capsule has been totally detached, we will approach the medial side of the tumor. If it's adherent to the important neurovascular structure or sinus cavity, then we will leave a cuff of a tumor attached to it. Otherwise, if it's easily removable, we'll remove it. And then we open the dura over the, then we approach the orbital part of the tumor. We have already removed the orbital wall, and we will start removing start debulking the tumor and removing the capsule of the tumor from the optic nerve. In a peel-off manner, we will start peeling it off. And once the tumor is removed, we have to secure the hemostasis and then close the dura in a watertight fashion and replace. If their bone has involved and hyperostosis, we drill it and then drill the hyperostotic part and then replace the bone with the titanium mini plates and screws and then close the skin in the eye muscles in the reverse order. We will place an extradural drain. Okay. So what could be the complications of this procedure? Intraoperative, we can damage the surrounding neurovascular structure, like the damage can be to the optic nerve during the anterior clinoid process drilling, thermal injury, and any vascular injury to the vessels, and excessive retraction on the lobes can result in the contusion. And post-operative patient can have hematoma. Not incomplete closure of the dura can result in CSF leak, excessive retention, and contusion later on result in a seizure. And skin, these are all common. In skin infection, wound infection. All right. So you were really good, Dr. Atia, and you answered all the questions very fluently, very nicely. Just a few suggestions. When you say कि हम incision देंगे इसको, rather it would be very nice and बड़ा एक अच्छा आंसर लगेगा if you say कि we'll give the unicoronal hairline incision. And फिर उसकी आप dimensions बता सकते हो कि the starting point would be in front of the tragus and crossing the midline and all. अच्छा, दूसरी चीज के वर्कअप में ophthalmological workup was very necessary and important. जैसे आप मुझसे vision पूछ रहे थे, तो before going for the surgery, it's very important ophthalmological workup करवाना to look for the patient की vision कैसी थी before the surgery. Otherwise, you were really good and you covered almost all the important aspects of the surgery as well. Okay, thank you. So these are the examination points important from the when you do the examination of the eye, particularly the proptosis. And most of the things already Dr. Atia has told. You can read this slide later on. So practice more and more on the patients, not just reading, but start performing on the patient as well. Because यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए ट्रिकी है बिकॉज जो कमांड थी स्टेशन की दैट वाज एग्जामिनेशन ऑफ द फेस एंड यू सी देयर इज द प्रोक्टोसिस एज वेल. तो अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं टू एग्जामिन. First, start doing the examination of the proptosis and then come to the rest of the face, or do the examination of the face and then come to the proptosis. What I would suggest or advise is to better go for the examination of the proptosis first, so that you can do it in detail and do not miss any point. Rest of the face examination you can perform later on. But if you leave any important thing on the proptosis की examinations में, तो that is a major blunder. और आई की पूरी एग्जामिनेशन जैसे बताई डॉक्टर अतिया ने, वो करेंगे हम प्रोक्टोसिस की एग्जामिनेशन लेटर ऑन. कमिंग टू द फेस, फेस पे आपने ट्राइजेमिनल फेशियल particularly, these are very two important nerves. जब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स करवाओगे तो थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व वैसे ही आप कवर कर चुके हो. एंड विजुअल अक्यूटी would be covered in the cranial nerve number 2. Fundoscopy बताना very important. And then coming to the relative examination में आपने जो है pronator drift और patient के planters देखने हैं. Bruit, hearing the bruit and feeling for the pulsation is very important. And अगर इसमें कोई relevant question पूछना हो patient से, तो the most important thing is the vision आपने पूछना है कि vision patient की है या नहीं है, और अफेक्ट हुई है तो कितने अरसे से हुई है. सेकेंडली, ये जो प्रोक्टोसिस हुई है कितने अरसे से हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Now coming to the frontotemporal orbitozygomatic approach. This is a very tricky approach, especially in the cases of these sphenoorbital meningiomas. They can ask you about this approach, and this basically technique provides the access to the skull base, particularly to the anterior cranial fossa, middle cranial fossa, as well as to the orbit. So this is an excellent approach. This is actually a modified version of diurnal approach. We extend it more towards the frontal side, and orbitotomy भी करते हैं हम इसमें. And zygoma can also be removed if the tumor is extending too much downward. So indications are the large medial sphenoid wing or sphenoorbital meningioma. Suprasellar or the parasellar tumors can also be addressed with it. Lesions at the orbital apex or in the third ventricle, and the anterior communicating artery or the basilar trip aneurysm can also be approached through the, basically it's a modified version of diurnal approach. So when you want to extend more towards the frontal side or downwards going into the zygomatic region, वहां पे हम इस approach का नाम लेते हैं. The most important one is the key burhole. Key burhole here, it is also known as the McCarthy keyhole. Burhole, इसकी dimensions पूछ सकते हैं. It is just 5 to 9 millimeters, behind the frontozygomatic suture. यहाँ पे frontozygomatic suture के 5 to 9 millimeter behind, and below यहाँ पे हम perform करते हैं key burhole, which gives us the access to the orbit, to the anterior cranial fossa as well as to the middle cranial fossa. इसको further हम extend कर सकते हैं. Let's see if I have the picture. Okay, so the first burhole यहाँ पे जो आप देख रहे हो, this is the key burhole. Second burhole you are going to make in the on the frontal side just above the orbit. It depends upon the extent of the tumor. यहाँ पे जैसे हमने past the midline लेके आ गए हैं orbit के, again it depends upon the, there's no fixed point for it, depends upon the extent of the tumor. एक बरहोल हम ऊपर यहाँ पे करते हैं. अच्छा, जैसे डॉक्टर अतियान ने बताया कि the muscular flap would be taken downwards. Why? नीचे की तरफ हम इसको करते हैं because to maintain its blood supply of the temporalis muscle. जो चौथा पर हम करते हैं, it is just above the zygomatic arch, base पे temporally. This is the real-time picture जिसमें ये दिखाया गया है कि muscle flap that has moved downwards, और यहाँ पे जो ये this depressed part आप देख रहे हैं, यहाँ पे you are going to make up the first burhole, that is the McCarthy or the key burhole. Once you lift up the bony part, जो bone हमने raise कर दी है, you are going to see a wide exposure. Here you can identify the structure. This is the frontal lobe. यहाँ पे हमने de-roofing की है orbit की, and you can see the eyeball here, Selvian fissure, and the temporal lobe. So a tumor that is extending into the frontal, temporal, as well as to the orbital sphenoid wing meningioma that can easily be approached by this. Regarding the resources, Al-Mafti में chapter number 26 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है sphenoorbital meningioma. In chapter number 25, that is I guess clinoidal, उसमें surgical approach बड़ी अच्छी बताई गई है इसकी regarding the diurnal approach. Again Greenberg में chapter number 46 and 106 chapter जो है उसमें surgical approach diurnal explain की गई है. ये यहाँ पे एक मैंने link share किया है. This was a very good informative video जिसमें बड़ा briefly step by step बताया गया है कि how do you perform the diurnal or the frontotemporal orbitozygomatic approach. Which brings us to the last station of not only the day but of this course as well. And so again, this is an easy station but very important one from the exam point of view. So anyone want to volunteer for it?
Dr. Aisha, Dr. Tayyaba. Dr. Sidra. Dr. Prakash, are you going to do the last station again? Dr. Ajit. Dr. Harun. Yes, sir. Oh, okay, Dr. Harun. If no one is doing the station, would you like to do the last station of this course? Yes, sir. No Heavy problem. heart. Let's move towards the last station. Do the examination of the Okay, face first of of all, sir, we patient. will introduction and greet the patient, and then, sir, after taking consent, we will start examining the face first from the front, and sir, if there is prognosis, so that's why we have to see from the back and from the sides also, and then, sir, we will after inspecting, then we will palpate palpate the fossa, like if there is a acromegaly or the proptosis. So according to the anomaly, we have to change our command. So, sir, if there is acromegaly, then we have to measure intercanthal distance. And sir, if there is a proptosis, then we will have to measure from the one eye and then compare this from the second eye, and then, sir, we will start the then we will check the star shape for the proptosis, that either it is axial or non-axial, axial or axial for the proptosis. And then, sir, we will move to the first kind of sorry. And so also one thing I forgot, if we have the facial palsy, then we have to grade that either it is upper or either it is lower. If the upper, then we will start from the to rule out the upper motor neuron type lesions according to this. And if there is a lower motor type, and then we have to measure the lower six cranial nerves. And so actually, sir, I don't know about the exact anomaly, so that's why I'm telling all the things which have to, all the relevant things which have to we have to see in the face. Gigi. And then, sir, we have started if for the acromegaly. So first of all, we will see you have to two second cranial nerve, 3, 4, 6, and V1, V2, and also the seventh. And sir, in the facial, I already told. And if there's a proptosis, then we have to see second crane of then 3, 4, 6. And after this, sir, now for the relevant examination, I have to see the pronator drift and sir, long track signs, and according to the command, if there is a lower crane of lower motor neuron, then I have to see this with the cerebellum signs, or if there is upper cranium, then we have to see the frontal release sign, parietal sign, and the pronator drift according to the ठीक lesions. है. अच्छा, oral cavity और nasal cavity देखी आपने? Sir, I forgot, sir. In acromegaly, we have to see all these things: nasal cavity, oral cavity, tongue, and then, sir, then we have to move the other sides, interdental distance, sir, and then according to this, then we move to the heart, like from the head to toe, from the brittle ears, sir, and the Check the head of the patient if the patient is shunted or not. That is again very important, tricky point that usually we miss during the examination. yes.
ठीक है. So Dr. Harun, these are the findings in the patient. Patient has pain on pinprick over the right side of the face. Rest of the examination was unremarkable. क्या diagnosis आ रही है आपके mind में? Pain and pinprick loss, sir. नहीं, exaggerated है. Patient is having exaggerated pain. Sir, ये TGN sir, right V1 V2 TGN sir. आपको TGN लग रहा है ये? Yes sir. मुझे differentials, important differentials बताइए TGN के. So important differentials में sir hemifacial spasm है sir, और then sir TGN है sir, then अपना sir, कोई any other dental pathology, or sir any temporomandibular joint sir pathology, and others sir, dental, oral, or any other sir oral and maxillofacial related disease sir. What are the important points that are in the favor of trigeminal neuralgia? How do you diagnose it? Sir, first of all, sir, because the pain is in the sir, current-like pain, electric shock-like pain over the face or any side, and sir, in the distribution of the V1, V2, and V3 nerves, the skin nerve. Okay. और क्या चीजें differentiate करती हैं इसको बाकी pathologies से? Sir, इसमें बाकी और कोई if the patient is has no any other deficit, ठीक है. like the special nerve and the thing only and not only hemiplegia, paraplegia. Okay. What's atypical facial pain? Sir, atypical facial pain is like sir, so it is also the differential diagnosis of TGN. जी जी. And, उससे कैसे differentiate करते हैं हम उसको? Sir, in trigeminal neuralgia, we will give the patient Tegral, and the patient Nice. did it settle down, then it is atypical facial pain. Okay, that is one. Second differentiating point is atypical facial pain will be constant. Episodic नहीं होता है, just like the trigeminal neuralgia. And also, sir, it is not in the facial like trigeminal distribution. It can be Particular उसकी distribution नहीं होती है. Sometimes V1 V2 में होगा, कभी V1 V3 में होगा, कभी सारे साइड पे होगा, और autonomic dysfunction के भी उसमें features होंगे, excessive lacrimation, crying and all. ठीक है. अच्छा, how you will investigate? क्या करवाएंगे इसमें investigations? So first of all, sir, I will do this over the scene. Because sir, because sir, if we will Farooq last time told me that if you know about the exact diagnosis, then you have to say about MRI. But we said that MRI in our setup in examiner, they feel mind why you said MRI. So now how you will proceed in this case? So first of all, sir, we will give the proper NF analgesic, like carbamazepine and oxcarbamazepine, 400 mg. We will start from the 200 to 400 mg. Then we will increase according to the pain of the patient. Maximum dose we can give 1200 mg for the carbamazepine and 2400 mg of oxcarbamazepine. If the patient pain didn't settle, then we will have go to the second line, sir, which are gabapentin, and sir, which we can give, sir, 3600 mg, sir, maximum dose. Nice. And the third, एक और drug? And third one is sir, baclofen, sir, which we can give 80 mg, sir, maximum dose, 80 mg per day. नाइस, वेरी नाइस. बिल्कुल सही आपने आंसर किया. इसको आप इस तरीके से जवाब दे सकते थे कि वी हैव टू ऑप्शंस हियर. वी विल स्टार्ट विद द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में लेट एग्जामिनर आस्क कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप कौन सी ड्रग्स देते हैं, फिर उसके बाद ही सारा आंसर आप दें. ओके, नाउ कमिंग टू द इंटरवेंशंस. इंटरवेंशन के कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास?
Sir, for the intervention, so we have multiple options. First of all, sir, like there are some blocks, in the V2, V3 especially territory, we can give the alcohol block, hot water, sir, block, hot water injection, and sir, then the balloon, we can V1 also ब्लॉक कहाँ पे करते हैं? V1, लैंडमार्क्स sir, V1 के सर सुपर ऑर्बिटल सर. कहाँ पे? लैंडमार्क्स बताइए उसके. एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, लेकिन सुपर ऑर्बिटल रिच पे सर हम करते हैं ना, सुपर ऑर्बिटल रिच पे. ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियल साइड, फ्रॉम द मीडियल जो वॉल है ऑर्बिट की, उससे 1 to 2 सेंटीमीटर मीडियली जब हम जाए, लेटरली जाएंगे सॉरी, तो आपने फील करनी है सुप्रा ऑर्बिटल रिज. जस्ट वहां पे आप दे सकते हैं. अच्छा, मुझे कोई ऐसी पॉइंट बताएं जहां पे वी कैन ब्लॉक ऑल थ्री, V1, V2 एंड V3. सर सर गिजरिन गैंग्लियन सर. तो गेजरिन गैंग्लियन को कैसे हम टारगेट करते हैं? सर गिजरिन गैंग्लियन बेसिकली सर ये ट्रैगस के एटीरियली पड़ा होता है, तो जी सर वी विल गो, और सर इट इज सीएम गाइडेड सर जाएंगे हम. सियाम गाइडेड भी जा सकते हैं, बट इसके जो लैंडमार्क्स है यूजुअली वी फॉलो दी जाइगोमेटिक आर्च को फॉलो करते हुए जाएंगे जस्ट मीडियली, जहाँ पे आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बीच में स्पेस मिलती है, जस्ट बिलो दी जाइगोमा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वहां पे आपने 90 डिग्री पे जो है अंदर इंजेक्ट करना है. ओके सर. ओके सर. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दी ब्लॉक्स, नाउ ब्लॉक्स कौन सर कौन से ऑप्शंस हैं? आरएफ सर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. ठीक है, किस पेशेंट में करेंगे, क्यों करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस? सर इसमें ये कि जो इसमें सर इन दिस सर विच पेशेंट विच डू नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, एंड सर Okay. आल्सो नॉट ओनली सिंगल नर्व पैथोलॉजी, लाइक ओनली फॉर द V2 और V3. ठीक है, वो और कौन से we can, कैंडिडेट्स होते हैं पेशेंट्स? sir young patient, no sir, old ठीक patients है. are having comorbidities like diabetes, hypertension, and sir which are not willing for surgery. राइट. ओके. अच्छा, सर्जरी की तरफ आते हैं. सर्जरी में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? सर सर्जरी में सर गोड सिलेंडर सर माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन. MVD के स्टेप्स बताइए. MVD sir, we first we will admit the patient, and after the anesthesia draping a position, so we will make two positions like a park bench or the left, right or left lateral, sir, lateral position. And so in park bench, we will do incision like retrosigmoid, lazy S incision behind the pinna, sir. It is actually for sir 2 centimeter above, one third sir above, and 2/3 below, from the from that junction. From the राइट. junction, it is transverse sinus. And first of all, we will mark the transverse sinus, midline transverse sinus, and then we will mark our incision 5 centimeter behind the pinna, Right. behind the tragus, and so 1/3 above the transverse sinus, and 2/3 below the transverse sinus. Then after sir, giving the incision subcutaneous dissection, we will subperiosteal dissection. Then sir, we will identify the asterion, and sir after identifying, sir, we will give the first burr hole to the asterion, and then after this sir, we can increase our conectomy, sir, 3 into 3 centimeter suboccipital, 3 into 3 centimeter sir conectomy. And sir after that we will durotomy, sir, curvilinear durotomy. And sir after dura, sir, then we will start draining the CSF from the CPAP assistance, or either sir, if the brain is tight, then we can take from the cisterna magna. And so then after sir, then we will slowly sir retract the cerebellum, retract the cerebellum, and then sir we will take the microscope in, and sir after then sir we will slowly drain the CSF, and then we will reach to the neurovascular bundle. First of all, sir, our in this incision, sir, the 7th, 8th nerve complexes will come first, and so then a little bit interior we will
find anterosuperior, we will find the fifth cranial nerve, and sir, then we'll identify the loop of vessels, sir, which is most probably superior cerebellar, sir. And the other ones also, then sir, we can separate. We will separate the superior cerebellar from the trigeminal. So then we will put any like telfa dressing or Surgicel or anything, sir, which is sterile, that we can put in between the trigeminal nerve and superior cerebellar. And then after that, sir, we will check the hemostasis, and sir, we will then we will close the dura and close the wound in the reverse order. ओके यहाँ पे कोई वेसल या वेन जो आपको तंग करे कि जिसको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो? सॉरी सर, शुरू में बोल गया था, शुरू में सर एक तो एमिशरी वेन्स आएंगी कनेक्टिव में सर, उसको हम बोन रेक्स करेंगे, और सर पेट्रोजल वेन, सर पेट्रोजल वेन आपको तंग करेगी। ठीक है कि आपने एमईडीबी सॉरी की सर, है पेशेंट, आवाज आ रही है आपको? या आ रही है, यस सर, आवाज आ रही है। सो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन। जी सर, आपने पेशेंट की एमईडी की है बट स्टिल द पेन इज नॉट रिलीव्ड, अब क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? सर एक्चुअली इट इज सर वेरी लेस कॉमन, because sir in this procedure sir it has 99% prognosis, but sir I'm telling you कि patient still has pain. Sir, then we will do sir any other procedure like RF. We can give RF or neurectomy. न्यूरेक्टमी कहाँ पे करेंगे? सर वो जो लीजन है सर, अगर V2 है, V3 का लीजन है, तो जिस टाइप का लीजन सर। और कोई प्रोसीजर जो हम कर सकते हो अभी पेशेंट में? और सर इसमें सर वो लीजनिंग से हम ये कर सकते हैं, स्टीरियोटैक्टिक SRS। SRS इज बेसिकली, अगर SRS फेल होता है तो वी कम टुवर्ड्स द सर्जरी, और सर्जरी के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी की इतनी कोई वैल्यू नहीं है स्टीरियोटैक्टिक की। फिर सर इसके अलावा भी ज़हन में नहीं आ रहा। जो रिट्रो गेजेरियन अप्रोच है, उससे गेजेरियन की हम सेक्शनिंग करते हैं वहाँ पे सेंसरी सप्लाई की। होता ये है कि जो आपका गेजेरियन गैंग्लियन है, या बेसिकली पोर्टियो माइनर और पोर्टियो मेजर, ठीक है। तो पोर्टियो मेजर बेसिकली इज द सेंसरी पार्ट, बट द पोर्टियो माइनर उसके साथ भी फ्यू सेंसरी नर्व्स आर ट्रेवलिंग, तो उसके लिए हम सेक्शनिंग करते हैं गेजेरियन गैंग्लियन की, बट इट्स अ वेरी एक्सट्रीम प्रोसीजर। मुझे ये बताएं कि स्टीरियोटैक्टिक में वेयर डू यू टारगेट एंड व्हाट आर द डोजेस, कितनी रेडिएशन देते हैं वहाँ? सर अभी एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं डोजेस, लेकिन सर 2 to 3 ग्रे सर, फ्रैक्शनेटेड फ्रैक्शन देते हैं, 2 to 3 ग्रे सर, 80 to 90 ग्रे इसमें हम डोज देते हैं। टोटल डोज सर? जी जी, ओके, 80 to 90 डोज हम देते हैं। ओके, सो डॉक्टर हारून, really nice and well done for the station. Okay, so face examination we have discussed it multiple times. अभी मैंने कुछ चीज़ important बता भी दी इसमें। Coming to the differentials, इसमें important one is the atypical facial pain which remains constant, and autonomic dysfunction भी जिसमें होता है, and pain that does not respond to the carbamazepine. You have to think about other possibilities. जिसमें neurological deficit आ जाए, you have to think about the trigeminal schwannoma. This is the distribution of the three nerves V1, V2, V3. V1 का जो block हम करते हैं just above the eyebrow on the medial side, lateral side from the medial wall, 1 to 2 centimeter, यहाँ पे हम टारगेट करते हैं। V2 का ब्लॉक which is very less common, infraorbital फिशर में हम यहाँ पे देते हैं। ये V1 की पोजीशन है। Coming to the Kazarian blockade, ये जो हम करते हैं just below the zygomatic bone. This is just below the zygomatic bone. This is the temporomandibular joint, यहाँ पे जो बना है इसके बीच में you can feel a bit, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फील होता है, वहाँ पे आपने जाना है 90 डिग्री पे
and you can give the agent phenol or the alcohol. Another option is there, supraorbital neurectomy कर सकते हैं हम, but again this procedure will only be performed in those patients who are not fit to go for any kind of invasive procedure. Just नहीं कर सकते, उसमें हम ये करते हैं. इसमें फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन भी प्रिवेंटेड बाय हो रहा है. So it brings us to the end of the session. Dr. Majavin? जी डॉक्टर बाबर. Okay, so let's conclude the session. अभी क्या दुआ हुआ पढ़नी है, क्या करना है? बड़े हैवी हार्ट के साथ, एंड लेट्स विश सबके लिए. जी इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे. और बहुत मजा आया, एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई सारे कैंडिडेट्स के साथ. विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और होपफुली हमारा ये जो छोटा एफर्ट था, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू पीपल इन अटेम्प्टिंग द एग्जाम. इंशाल्लाह ताला. किसी को नाइस एफर्ट सर. शेयर सर कर दीजिएगा पीडीएफ्स ना. मतलब कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किए शुरू वाले सेशंस, तो कह रहे कि जी पीडीएफ्स आ रहे हैं ना, इनके शेयर कर दीजिएगा. दूसरा मैम एक और चीज पूछ रही थी कि इसका जो लिंक है वो यूट्यूब पे अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट लिंक नहीं आता इसका ना. डॉक्टर हारून, आप अगर फॉलो करेंगे डॉक्टर मेजबीन को या मुझे, हमने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है एग्जिट एग्जाम का, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 6 आज की जो है, अभी हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे उसमें. जिस तरह डॉक्टर फारूक का है ना कि पेज जेपीएमसी वाला, उस पर सारी वीडियोस सब शो हो रही होती है ना. जी मैंने एक फोल्डर बना दिया है उसमें, डॉक्टर मेजबीन ने भी शायद फोल्डर बनाया है. थैंक यू सर. न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी एग्जिट एग्जाम के नाम से. if anybody has to say anything, any comments, any feedback, you're more than welcome. Okay then. बाकी बस टिप यही है मैम, हमारा भी एक्चुअली एग्जाम लेट है, तो अभी जिनका करीबन के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़े, उसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, 2 नफल सलातुल हाजत के, और अपना कुछ दुआएं हैं जो एंजाइटी के लिए बचने के लिए जो ना, वो यही चीज़ें हैं. इसमें बाकी जो किस्मत में लिखा हुआ है वो इंशाअल्लाह सबको मिलेगा. उसका टाइम जो ना वो अल्लाह ताला को पता है. तो बाकी कोशिश तो हर बंदा ही करता है. Let me ask Dr. Atia, who has already passed her talks, and Yes, if she could respond how good our session was. Actually, it's a feedback system, so it's there is obviously room for improvement. So if you would like to comment कि कौन सी चीजें अच्छी थी session की, या कौन सी lackings थी which we can improve if we go for the session again for the next year. सर इट वाज वंडरफुल. मतलब जब हमने लास्ट टाइम तैयारी की थी तो हमें टॉक्स वगैरह का आइडिया नहीं था इतना, हम खुद ही पढ़ रहे होते थे और रैंडम बुक्स देख रहे होते थे. तो अभी जब मैं देख रही थी तो इनको एक कॉम्पैक्ट सब कुछ मिल रहा है. ये सारी चीजें अपनी दफा में, जैसे आप लोगों ने भी, हर किसी को खुद ढूंढनी पड़ती थी, तो टाइम भी काफी इन लोगों का इसमें सेव हो गया. इन्हें आइडिया हो गया कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है. और नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लें, कि जैसे ट्यूमर्स को बजाय 1-2 सेशंस के हम 3 सेशंस में करते हैं. डीजेनरेटिव और ट्रोमेटिक स्पाइन सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ है कि वो 1-2 लॉन्ग केस में कंप्लीट नहीं होता है. क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल करते हैं सारे लोग, हिस्ट्री हो जाती है, एग्जामिनेशन भी हो जाता है, फंसते हम डिफरेंशियल्स में, क्योंकि समहाउ सम वे जब आप लेते हो हिस्ट्री आपको समझ आ जाता है कि मसला ये है. अब एग्जामिनर आपको कह रहे थे कि नहीं मुझे ये जस्टिफाई करो कि आप ये क्यों सोचो ये, और मुझे हर हाल में 3 डिफरेंशियल्स दो. कई बार डिफरेंशियल नहीं, कोलॉइड है, उसकी हिस्ट्री में बस लग रहा है कि कोलॉइड है, लेकिन नहीं, वो कहेगा आप जस्टिफाई करो. तो इस चीज पे मैं खुद भी तक पर्सनली स्ट्रगल करती हूँ कि मुझसे डिफरेंशियल्स नहीं बनते हैं. बस मुझे क्लियर कट 1 या 2 बातें लग रही होती है कि ये है, और उससे आगे मेरे
ब्रेन बस स्टक हो जाता है उस पर। तो मुझे और स्पाइन में हम लोग सब मतलब आना, मुझे लगता है करना सबको आता है स्पाइन, लेकिन जब हम, क्योंकि स्पाइन में कोई रूल्स नहीं है, हर किसी की अपनी अप्रोच है। एक बंदे को आप बोलोगे टीलिफ करना है तो दूसरे कहगा नहीं टीपीएफ कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। बुक वाली बात कोई सुन, जब पेपर हो रहा होता है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस पे भी जा रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर हम नेक्स्ट टाइम जरा सा आप लोग कोर्स जल्दी स्टार्ट कर लें तो मल्टीपल सेशंस हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी इट वाज रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। was a pleasure. Thank you, Dr. Atya. If we'll obviously it was our first course, so it was kind of फिर भी हमने बहुत ज़्यादा organize करके चलाया है, but still obviously जब start किया था हमने, so we are just waiting for the theory result. तो थ्योरी का जैसे ही रिजल्ट आया, जब जैसे कहते या जिनको आइडिया हो गया कि अब हम जो है वो एग्जाम में अपेयर होने, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता थ्योरी का तब तक लोग जो है वो प्लस माइनस होते हैं स्टार्ट करने के लिए। मतलब वाइवा की प्रिपरेशन काफी लोग तो कर देते हैं स्टार्ट, आइडियली कर भी लेनी चाहिए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हमने कहा जब रिजल्ट आ जाए थ्योरी का तो उसके बाद कोर्स स्टार्ट करें, ताकि हर कोई एक क्लियर विजन के साथ जो है वो ज्वाइन कर सके और प्रैक्टिस कर सके उसी मतलब जज्बे के साथ। तो we'll see that, we'll try कि थ्योरी जैसे ही हो जाए हम उसके फौरन बाद स्टार्ट कर दें rather than waiting for the result। बाकी यस ट्यूमर्स में जो है वो विल मेक इट, जो चीजें हम लॉन्ग केसेस में कवर नहीं कर पाते ऑब्वियसली, अगर हम इवन 6 के बजाय 8 मॉड्यूल्स भी करते हैं तो फिर भी लॉन्ग केसेस हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 और बढ़ा सकते हैं ना। सब चीजें लॉन्ग केस में नहीं हो पाएंगी कवर, तो इसी वजह से इफ यू नोटिस केयरफुली कि हमने हर मॉड्यूल में 8 टॉक स्टेशंस, 4 शॉर्ट केसेस, 2 लॉन्ग केसेस। ओके, तो दैट मेक्स अबाउट 14 टॉपिक्स। तो हमने 14 टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। तो उसको हमने अलग अलग तरीके से, इवन जो हम टॉक्स भी करवा रहे हैं उसमें भी हम वो टॉपिक मोर और लेस पूरा कवर कर रहे हैं, जो शॉर्ट केसेस कर रहे हैं उसमें भी टॉपिक वो पूरा कवर हो रहा है। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम ये है कि ऑब्वियसली वैरायटी रखेंगे। नेक्स्ट टाइम ये होगा क्योंकि अब ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आप लोग बार बार भी देख सकते हो। दूसरा ये कि जो लॉन्ग केसेस अब इस दफा हुए हैं, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ताला जो लॉन्ग केसेस इस दफा कवर नहीं हुए हैं वो हम फिर टॉक्स और शॉर्ट केसेस में वो अलग पूरा उसका जो है वो सारा हम करेंगे। वो लॉन्ग केसेस रिपीट नहीं करेंगे जो अभी हमने इस मॉड्यूल में किए हैं। तो ये एक डिफरेंस है, बिल्कुल वो कर सकते हैं, बट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन ओनली लॉन्ग केसेस दैट वुड बी practically very like next to impossible. So but we'll obviously work on it, and inshallah we welcome you all to give your opinion, give your feedback, or even if you can make a 1 or 2 minute video on how your preparation changed on this by this course, or what improvements that you want. So it would be very helpful for us, or you can if share it right now. अच्छा, रिगार्डिंग द डिफरेंशियल्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे होता है कि एग्जाम से पहले हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स हर कोई देख रहा होता है। लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल कि हमारा जो इस्लामाबाद में एग्जाम था, तो आई वेंट टू पिम्स, वहाँ के सारे पेशेंट्स देखे हुए थे, सीएमएच के सारे पेशेंट्स देखे हुए थे। आई हैड द डायग्नोसिस इन माय माइंड। बाज औकात ऐसे होता है कि व्हेन यू हैव ऑलरेडी सीन द पेशेंट तो आप एक डायग्नोसिस अपने जहन में बना लेते हो सॉलिड। जैसे सर गौहर जावेद का जो सेशन आपने अटेंड किया हो, तो उसमें सर वाज अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि जो इवन इफ यू नो कि दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट, पर जो मोर कॉमन डायग्नोसिस है वहां पे वो आप रखो। लाइक फॉर सपोज अगर ये टीबी इज मोर कॉमन तो आप टीबी ऊपर रखो। मैट्स जो है इफ इन अ पर्टिकुलर केस इट इज लेस चांसेस, बट आपको पता है कि वो मैट्स है, इवन दैट फिर आप उसको सेकंड डिफरेंशियल पे रखो। देन उसको आप डिफेंड करके जब ऊपर लेके आओगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, तो एग्जामिनर वुड बी हैप्पी कि आपने जो है डिफरेंशियल में मोस्ट कॉमन जो है वो टॉप पे रखा था। सो दिस इज दी वन टिप कि एक जो है अपना माइंड किसी भी एक डायग्नोसिस पे ना बनाए, कीप इट फ्लेक्सिबल, और जिस तरीके से मोर कॉमन जो डिफरेंशियल्स हैं वो आप टॉप पे लेके आ जाएं। ओके, सो इफ जी जी डॉक्टर हारून।
नहीं क्वेश्चन मैं जी थैंक यू सर Okay. So I think we should wind up. Inshallah, wish you all best of luck, and inshallah, hoping to seeing you all pass. And बाकी कांटेक्ट अगर कुछ करना हो, कुछ पूछना हो, कोई फीडबैक देना हो, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन टेक्स्ट अस. एंड थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह ताला फिर जब कामयाब होंगे तो फिर साथ होंगे कामयाबी में इंशाल्लाह ताला. ओके, अल्लाह हाफिज. Okay, bye. Allah Hafiz. Best of luck all.